तो आगु को जीवा आगुरु किछिटा मु आपनको इन्फॉर्मेशन देवी हमर जो फाउंडेशन बैच और सेमेस्टर कोचिंग पे अपन देखुछंदी ओडिशा जुडिशियल सर्विस की जो भी स्टेट रो जुडिशियल सर्विस हो किंबा हायर जुडिशियरी एग्जाम्स करिका हो सेथरे आपनकर बेसिक लेवल टा किंबा फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग टा क्लियर हेतिबा दरकार जदि सेटा नहीं ताहले आपनको जहाँ भी हेले टिके इश्यूज हबो केते केते पिला अपन देखथिबे ताकू बहुत टाइम लागि जाय ओजेएस क्रैक करिया पई गोटे सेथरे जिंस थाय कि से माने जते बेले लॉ स्कूल रे पढुतांती तो ड्यू टू वेरियस रीजंस ताकर फाउंडेशन ता क्लियर ही न थाय लॉ रे ओके तेनो एज अ रिजल्ट सेटा परे तले आपण कॉम्पिटिटिव एग्जाम करिका दउचंती ओजेएस हला कि अलगा लॉ रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेथरे आपनको प्रॉब्लम होची ओके तेनो सेही सब जो स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रोची कि हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ता दरकार अछि कोर्स रो ओके लॉ रो डिफरेंट सब्जेक्ट्स रो तो सेथि पे हमर ई फाउंडेशन बैच हो सेमेस्टर कोचिंग ए पार्ट हमर रोची ओके इट इज डिफरेंट अपन जदि कहबे ताले हमर जो ओजेएस बैच रोची ताठो एटा अलगा तो कौन डिफरेंसेस रोची और एई बैच ता कहा पाई एठी कौन फैसिलिटीज आपन को रोची दैट आई विल डिस्कस विथ यू तो एई बैच ता हमर जो माने क्लासरूम रे करिया पे चाहउचंदी भुवनेश्वर रो खंडगिरी सेंटर रे ही एटा रोची तो सेठी आपण क्लास रे आसी क्लासरूम रे कर परिबे 6 टा रु 8 टा रो टाइमिंग रोची संध्या बेले मींस आफ्टर योर कॉलेज टाइमिंग ओके एडवांटेज कोन रोची रीडिंग रूम आपण को मिलिबो सेठी विथ वाईफाई फॉर यू नो क्लासरूम स्टूडेंट्स तो आपण जदि किछि पढा पढी करिया पे चाहउचन निजरो ताले भी जाकी लाइब्रेरी रे बसी के पढी परिबे रेगुलर आंसर प्रैक्टिस रहइबो आपण कांसेप्ट ता बुझायला आपण पूरा बुझिले तापरे हमें किछटा टेस्ट भी ता ऊपर वीकली आउ ओके मॉड्यूल एंडिंग टेस्ट करिका रहइबो बेसिक लेवल रो स्टार्ट हो मु किछि जानली लॉ ऊपर तथापि ओके मो पा क्वालिफिकेशन अछि तेनु मते बेसिक्स टू पढिबार अछि तो एठु हमें बेसिक रू स्टार्ट करी कि पूरा एडवांस लेवल माने जोठी कि आपनकर सेक्शन वाइज किंबा कांसेप्ट वाइज इंपोर्टेंट केसेस प्लस आपनकर लीगल मैक्सिम्स सेगुडा भी हमें कवर करूछु एठी आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस रहउची कि जेतु एटा मॉड्यूल वाइज माने गोटे गोटे सब्जेक्ट गोटे पेपर वाइज हमें कंप्लीट करिवो ईच पेपर पे आपनकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी एथरे रहउची ओके जो माने जॉइन करचंती क्लासरूम रे तो ऑब्वियसली फैकल्टी संगे डायरेक्टली इंटरेक्ट करि परिबे जो माने ऑनलाइन भी जॉइन करचंती गूगल मीट थ्रू रे आपण जहां भी डाउट्स पचारि परिबे आपनकर वॉइस रे ओके आउ आपनको इंटीग्रेटेड ऐप सपोर्ट भी मिलिबो डिफरेंस कौन रोची जुडिशियल सर्विस बैच रे ओई बैच रे जुडिशियल सर्विस बैच रे एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ा हुए जेंति कि तेरे प्रीलिम्स रो 15000 टा क्वेश्चन अछि जेटा प्रीवियस ईयर रे सब पढिछि मेंस रो 12 वर्ष रो सॉल्व्ड क्वेश्चंस सॉल्व्ड आंसर्स अछि आपनकर सब पेपर्स रो ओके सेटा एप्लीकेटिव एग्जाम ओरिएंटेड सेटा रहउछि और जो भी फैकल्टीज पढौचंती से माने भी एग्जाम को देखि पढौचंती कि हां एई जिंसोडा परीक्षा रे पढिबो वेरएज एही बैचेस रे कोन ना हमें फाउंडेशन टा क्लियर करछु तेनो आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड ठीक अछि आरो स्कोप टा बेसी ब्रॉड तेनो एटा आपनकर जो माने आगु जुडिशियरी देबे ताको पई भी दरकार हबो आउ जो माने जुडिशियरी पे इंटरेस्टेड नांती आपण आगु को जाई कि आपण प्रैक्टिस करिवे लीगल प्रोफेशन रे जिबे किबा अलगा कोनोसी एग्जाम पई आपण इंटरेस्टेड अछंती क्लैट पीजी देबे यूजीसी नेट देबे से सब एग्जाम्स पे जो बेसिक्स उडा आपण क्लियर हवा दरकार सेटा आपण ओके एई बैच रे आपण पाई जिबे सो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कवरेज होची सेमेस्टर और फाउंडेशन बैचेस रे पूरा जीरो लेवल रु हमें या भाबी कि चलछु पिला लॉ विषय रे किछि जान नांती ओके सेही हिसाब रे सेठी पढाउछु देन इंडिविजुअल डाउट क्लियरेंस क्लास टाइम रे तो सेठी डाउट क्लियर करिवे आ जदी ता परे आपण डाउट्स असला ताले आपण ऑनलाइन भी कर परिबे सेटा व्हाट्सएप थ्रू रे आ हम ऐप थ्रू रे भी कर परिबे ओके तापर 24/7 सपोर्ट आपण को रहउची जोडा इन द सेंस जा भी डाउट्स हला आपण व्हाट्सएप थ्रू क्लियर करि परिबे वाईफाई स्टूडेंट वाईफाई आपण को जो पर्यंत इंस्टीट्यूट रो टाइमिंग रहउची आपण जाई कि सेठी ओके स्टडीज वरिका करि परिबे लाइब्रेरी रे तापर क्वालिटी स्टडी मटेरियल आपण को रहउची जो जो मॉड्यूल आपण को आपण जॉइन करचंती तार प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको मिलिबो आपण ऑनलाइन रे जॉइन करले भी आपण आसी सेटू कलेक्ट कर परिबे रेगुलर टेस्ट आपण को रहउची आ आंसर राइटिंग ऊपर सेठी फोकस रहबो सो दैट आगु आपण जदी ओजेएस करिका देबे भी आपण एथरे पूरा रेडी हे कि रहबे ओके तो डिटेल्स कोन अछि ए पर्टिकुलर कोर्स रो तो
रिक्वायरमेंट आपण जो पर्यंत मते 3 मास पे दरकार 6 मास पे दरकार 3 वर्ष पे दरकार तो आपण डिपेंडिंग आपण को केते टाइम पर्यंत दरकार यू कैन जॉइन ओके एथरे आपणकर प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऐप एक्सेस लाइव और रिकॉर्डेड क्लास जो क्लासटा हैला गोटे दिन पर सेटा पुनी तार रिकॉर्डिंग टा आपन को ऐप रे अवेलेबल तेणु आपन ताको रिवाइज करिया पे चाहउछन से क्लास रे कोन गोटे कुआइतला मो लेखि पारलिनी भूलियली तो सेगुडा सब आपन कर परिबे टेस्ट सीरीज रहइबो आंसर राइटिंग रहइबो आ तार फीस रहउची 2000 पर पेपर किबा पर सब्जेक्ट ओके अब हमें स्टार्ट करूछु एटा एविडेंस एक्ट रु और बीएसए रु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रु ठीक अछि 24 तारिख रु एटा स्टार्ट होबो ओके मार्च 24 जो माने ऑफलाइन जॉइन करिवे क्लासरूम रे जॉइन करिवे से कांडगिरी सेंटर रे जॉइन कर परिवे टाइमिंग आपन 6 to 8 6 days a week वेटनेसडे हमर छुट्टी थाए आउ बाकी सब दिन इंक्लूडिंग संडे भी आपन क्लास रहइबो जतरे टेस्ट भी आपन वीकली टेस्ट करिका भी रहउछ आउ जो माने दूर रे अछंती किंतु कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहउछंती बिफोर गोइंग टू यू नो हायर लेवल एग्जाम्स ताले आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिवे ओके 6 टा रु 8 टा आपन ऑनलाइन रे भी जॉइन कर परिवे राइट ता बाद आपण जदि ओजेएस किंबा अलगा टेस्ट सीरीज करिका देबे ता पई हमर सेंटर्स अछि कटक कटक रे बेसिकली आपण जते टेस्ट सीरीज करिका अछि आपण कटक रे रहउचंदी सेल्फ स्टडी करचंदी कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर सारचंदी प्रीलिम्स टेस्ट देबे मेंस टेस्ट देबे तो सेगुडा आपण कटक सेंटर रे दे परिबे भुवनेश्वर शहीद नगर एठी हमर मेनली ओजेएस बैचेस उडा जा सेगुडा कंसंट्रेटेड रहउची भुवनेश्वर शहीद नगर रे आउ एई जो सेमेस्टर बैचेस उडा एटा हमर रहउची भुवनेश्वर खंडगिरी रे टेस्ट करिका जदि देबे तीनटा सेंटर रे जोठी भी आपण दे परिबे ओके सो केमिति जॉइन करिवे 7684054656 सेथरे आपण जॉइनिंग डिटेल्स पाइ जिवे ओके आई विश यू ऑल द बेस्ट डिफरेंस आउथरे कहि दउची ओजेएस बैच रे हमें स्पेसिफिकली एग्जाम ओरिएंटेड से बैच टा रहउची जो थरे कि ओजेएस रे जो टाइप रो क्वेश्चन पडुची ता ऊपर हमें फोकस करूछु फाउंडेशन बैच रे सेटा आपनकर बेसिक लॉ पेपर टाको पूरा वाइड स्कोप रे कवर कराउची ओके फॉर एग्जांपल मैं कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहबी कॉन्स्टिट्यूशन रे जुडिशियल सर्विस रे हमर पार्लियामेंट पड़ेनी तेनु प्राय जते हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढौछु ओजेएस पई वी आर नॉट डीलिंग विथ पार्लियामेंट इन डिटेल्स बट फाउंडेशनल कोर्स रे सेटा पूरा डिटेल रे पढाओ ठीक अछि तेनु स्कोप ऑफ फाउंडेशनल पेपर और फाउंडेशनल और सेमेस्टर कोचिंग इज मच ब्रॉडर as compared to your exam specific OJS coaching बुझिपाल सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आपनकर जदी फाउंडेशन स्ट्रांग अछि जो भी एग्जाम आपण इजीली क्रैक करि परिबे लॉ रो सेटा आपनकर नेट हो कि क्लैट हो कि यू नो आपनकर एनी अदर स्टेट रो जदी आपण हिंदी भी जानि जंदी ताले नॉर्थ इंडियन जते स्टेट्स अछि सबुरो आपण जुडिशियल सर्विस भी दे परिबे ओके सो बेस्ट विशेस नाउ वी विल कंटिन्यू विथ द क्लास ओके सो नमस्कार ऑल ऑफ यू तो काली हमें कंप्लीट करथिलु जस्ट बेसिक्स उडा देखुथिलु भारतीय साक्ष्य अधिनियम ओके तापर हमें एविडेंस विषय रे किछटा बेसिक जिंस देखिलु तो आज हमें कंटिन्यू करबा से हमर बेसिक्स रे तो ए पर्यंत हमें सेक्शन वाइज स्टडी स्टार्ट करिलु ओके एज आई टोल्ड यू इट विल टेक 2 to 3 क्लासेस बेसिक जिंसटा हमें बुझिबा पई तापर हमें सेक्शन वाइज सेटा स्टार्ट करबा तो आज बेसिकली हमरो फोकस रहिबो कोन दीटा जिंस ऊपर गोटे तो हैला ऑब्जेक्टिव ओके भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपण कहउचंती तार ऑब्जेक्ट ता कोन तार पर्पस ता कोन से एक्ट ठीक अछि ऑब्वियसली इट इज ए लॉ ऑफ एविडेंस ठीक अछि इट इज लॉ ऑफ एविडेंस तेनु लॉ ऑफ एविडेंस रो जा जा कैरेक्टरिस्टिक्स रहबा कथा सेगुडा प्राय सेथरे रहइबो प्लस आउ किछिटा चेंजेस जोटा हमें देखिबा as compared to your IEA Indian Evidence Act okay 1872 ताकू जदि हमें कंपेयर करिबा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 संगे ओके कॉन्ट्रा डिफरेंसेस अछि प्लस criticisms को थरे हिच what have been the major criticisms of भारतीय साक्ष्य अधिनियम ए पर्यंत ओके जहाँ तार अच्छी ऑलमोस्ट एबे हमर वर्षे पाखापाखि हब ओके तार इम्प्लीमेंटेशन रो बट
what are the major criticisms and lacuna जोटा हमें देखिचु in case of भारतीय साक्ष्य अधिनियम तापरे आमे किछिटा क्वेश्चंस करिवा जहा आज आमे पढिचु ता उपरे ओके so that will be the agenda for today's class right अच्छा काली क्लास से जदि कार कोन डाउट्स अछि ताले आगे पचार दियंतु otherwise I'll move to the okay what we have to study today आज जा पढिया सेठी की हमें that we will see any doubts in yesterday's class then you can ask nine okay so let us then start with the objects okay or the purpose of this act okay भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ର purpose कौन what is the purpose of this act that we will discuss acha without studying the details without going into much details can you tell me what is the what would be the overall okay object or purpose of this act 2023 ର you can tell me it out a law of evidence okay ତେଣୁ କଣ କଣ ଆର बेसिकली ऑब्जेक्टिव की पर्पस हवा कथा ओके माने Sir, आगु make it more efficient or reliable. how to make the अच्छा evidence laws more efficient or reliable अच्छा ठीक अछि तापरे आउ कोन anyone if anyone can add तो हेडिंग दियंतु ऑब्जेक्ट और पर्पस ओके ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑब्जेक्ट और पर्पस ऑफ PSA 2023 just a minute fix my pen okay now it's fine I guess objective or purpose of
भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Okay, objective or purpose of भारतीय साक्ष्य अधिनियम. So गोटे जिनस है कि obviously we know that भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो okay first important objective कौन. Okay, so obviously जोटा आपण कहले जने कहले कि जो एविडेंस लॉज गुड़ा अच्छी जोटा इंडियन एविडेंस एक्ट रे दिया है ताको आउरी केमती ओके बेटर मोर मॉडर्नाइज्ड मोर रेलेवेंट बनेबा अकॉर्डिंग टू टुडेस ओके रिक्वायरमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट लिखंतु मॉडर्नाइजेशन. ओके फर्स्ट पॉइंट टेक डाउन मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन कौन देखंतु अपन जो देखिबे इंडियन एविडेंस एक्ट को ओके तार ऑब्जेक्टिव जा थिला कि एविडेंस लॉज गुडा को ओके प्रॉपर्ली गोटे क्रोनोलॉजिकल और लॉजिकल फैशन रे ओके ताको एनएक्ट करिबा आउ ताको गोटे जगह रे ओके प्रॉपर्ली रखिबा सो दैट एटा गोटे स्टैंड अलोन लेजिस्लेशन हे कि रहइबो राइट. अच्छा एबे जेतरा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम को देखिबा तो कौन अपडेशन हबा कथा जो एक्ट 1872 रे हितिला प्लस ता अमेंडमेंट्स करिका हमर हेछि ओके. तो सेथरे मॉडर्नाइजेशन स्पेशली सबुठु बड़ जिंस जोटा हमें आगु जाई देखिबा भी अछि जेतरा हमें डिफरेंस देखिबा दीटा जाको कंपेयर करिबा तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ओके ऑल फॉर्म्स रो ठीक अछि जोटा आजिकली बहुत अधिका यूज होछि ओके. एवरीथिंग इज बीइंग डन थ्रू लेट्स से व्हाट्सएप हे गला ओके. लोकंकर सोशल लाइफ नाउ मोस्टली हैज कम टू द इंटरनेट. सोशल मीडिया रे लोक माने अधिका टाइम स्पेंड करूछंती तो सेठी जहा सब इश्यूज होछि एक्सक्यूज मी सेठी जहा सब इश्यूज होछि ओके इंक्लूडिंग क्राइम्स एंड ऑल ओके जो पे एविडेंस आपन को दरकार पड़िबो जेहेतु हमर कम्युनिकेशन रो मीडियम टा से आई हे गलानी ताले से सब जिंस गुड़ा भी एविडेंस अंडर रे आसीबा कथा मॉडर्नाइजेशन तार हबार अछि ओके. तो एटा तार फर्स्ट इंपोर्टेंट ओके आपण कहि परिबे ऑब्जेक्टिव दैट इज मॉडर्नाइजेशन राइट. एतरे कोन होछि ना करंट एविडेंस लॉज अच्छी से जो करंट एविडेंस लॉज माने जते बळे हमें इंडियन एविडेंस एक्ट कथा कहू ताकू रिसेंट किंबा कंटेम्पोरारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट संगे आउ जो लीगल प्रिंसिपल्स से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जोगु जो लीगल प्रिंसिपल्स इवॉल्व होची ओके सेही हिसाब रे आपनकर नुवा लॉज टा अपडेट करिवार अछि ठीक अछि. मॉडर्नाइजेशन एटा हला फर्स्ट पॉइंट ओके. तो कौन लिखिबे यू कैन जस्ट टेक डाउन आई विल जस्ट डिक्टेट द इंपोर्टेंट पार्ट्स आपण बुझिबे तबर लिखिबे. तो फर्स्ट हेडिंग हला मॉडर्नाइजेशन ओके. टेक डाउन टू अपडेट एंड अलाइन evidence law to update and align evidence law with contemporary technological advancements with contemporary technological advancements and evolving legal principles and
evolving legal principles. Okay, এটা modernization, এটা କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ important ଯୋଉଟା ଆପଣ difference ପାଇବେ କିମ୍ବା ସବୁଠୁ important ଆପଣଙ୍କର okay objective of the ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ। ଠିକ ଅଛି, it is basically okay important for the digital age ku ଚାହିଁକି ଆପଣ modernize ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। okay, so second point ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଅଛି, that is digital age relevance। ଆପଣ ଆଗରୁ ଯୋଉ law ଟା ଥିଲା ସେଟା ଟିକେ outdated ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। so now your question would be ଯଦି ସେଟା outdated ଥିଲା ତାহଲେ ଆମେ amendments କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେଇ law ଟା ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତେ, ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଣ ଦରକାର ଥିଲା, right? so the law has been made more robust, it has been made more effective, more oriented towards performance and accountability, ठीक है, which we will see not only the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, the other two criminal okay amendments also, PNS and BNSS, ठीक ଅଛି। ତ ଆପଣ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆପଣ ଟ୍ରାଏଲ ର ଗୋଟେ ଟାଇମ ଫିକ୍ସ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଏତିକି ଟାଇମ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେସଟା ସାରିବାର ଅଛି, okay, which you will obviously deal in those two papers, okay। BNSS already sir complete କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଉ BNS ଟା ବି ଚାଲିଛି ଆପଣ, okay। so second point take down heading ଟା ଲେଖନ୍ତୁ digital age relevance, so you understand it, okay। important points ଗୁଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଇଟ ବୋର୍ଡ ରେ ଲେଖି ଦଉଛି ଆଉ ଡିକ୍ଟେଟ କରିଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଆମକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ଏଗୁଡା ହେଲା ବେସିକ୍ସ, ମାନେ ଏବେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଲି ଯାହା ପଢିଥିଲୁ ଆଜି ଯାହା ପଢିବୁ ଆଉ ମେ ବି କାଲି ଯାହା ପଢିବୁ, ଏଗୁଡା ଏକ୍ସାମ ରେ ନ ପଢିପାରେ କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। so second point take down digital age relevance, okay। तो आजिकाली रो एज रे okay भारतीय साक्ष्य अधिनियम has to be relevant according to the changing times, right? so tara one line just take down digital age relevance subheading ରହିବ। तो काली आपण all of you attended the weekly test, attempt करछंदी? Yes, sir. प्रिलिम्स तो ठीक अछि, किछि कहबार नै, सेटा आपनको मिलि जिवो, आपण रैंक फैंक सब से ऐप रे मिलि जिवो, बट मेंस रो ओके काली राति रे तार अपलोड हे दिला कोन तार जो मॉडल आंसर टा, ठीक अछि। मॉडल आंसर टा ठीक देखिबे, किंतु सेटा को फर्स्ट कहै छी you try and understand the structure of the model answer, এইটা মুন্ডରୁ ବାହାର କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଭଳିଆ ଲେଖିଦେବି, ଚେଷ୍ଟା ତ ଆମକୁ ସେୟା କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟରେ ଆଉ ସେଇ କ୍ଲିନିକାଲିଟିରେ ଆମେ ଜେନେରାଲି ଲେଖିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଆରେ ମୁଁ 100% ରୁ ଯଦି 40% ବି ତା ହିସାବରେ ଲେଖିଦେବି ତାହେଲେ ବି ମୋର ବହୁତ ବଢିଆ ମାର୍କସ ଆସିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଆନାଲାଇଜ କରିବେ, ଫିଗର କେମିତି କରିବା କଥା ମୁଁ କାଲି କ୍ଲାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ଫିଗର ପାଇଁ ବି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଦେଇଛି, କଣ କଣ ଫିଗର ହବା କଥା। ଏଗୁଡା ସବୁ 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, 6ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 10 ମାର୍କ 60 ମାର୍କ ଥିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଫର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ୟୁ ମେକ୍ ଦ ଫିଗର, ଓକେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫିଗର କରିବା ଦରକାର, 15 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ତାଠୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ଫିଗର କରିବେ, ଓକେ। but you have to answer and you see how point wise it is written, जो आपण एबे भी बहुत लिखिया पड़े, you see the content quality and quantity, okay। quantity टा भी important, कहीं ना आपण यदि बहुत अल्प लिखियो तो केबे भी मार्क मिलिबन। सब जिंस ठीक लिखिछन किंतु यू नो जो साइकोलॉजी थाए जेमति इवैल्यूएटर रो कोन खाली गोटे दी पेज लिखछन, but you have written all points, still you will not get the marks, okay। so it has to be a fine balance between point wise representation and ଯେତିକି ଲେଖିବା କଥା ସେତିକି ହେଲା। ଗୋଟେ A4 पेपर
पेज सारिया पे हमको पाखापाखि 5 रु 6 मिनिट लगे 20 to 25 वर्ड पर मिनिट हिसाब को देखिले बुझिपारुछन सो से हिसाब रे 25 मार्क जोटा आपण को क्वेश्चन पडुची सेतरे आपण 6 मिनिट हिसाब रे धरंतु 4 पेज पाखापाखि आपण को लिखिबार अछि ऑप्शनल पेपर्स रे 5 पेज पाखापाखि 25 मार्क क्वेश्चन को लिखिबार अछि ओके दैट इज एंड सेतरे पुनी हमरो डायग्राम्स ऐड गला गोटिटा तो गोटे पेज बढ़िया तो ସେଇଟା ବି ମାଇंड ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ମୁଁ 25 ମାର୍କ क्वेश्चन ର ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲେଖିଲି ସବୁ ପଏଣ୍ଟସ୍ को गोटे लाइन रे एक्सप्लेन भी कली किंतु दी फाଳ लिखिली 2 पेजेस ताहले केबे मते 25 मार्क पई मु एलिजिबल हेबेन हैला तेणु दीटार बैलेंस दरकार क्वालिटी भलो थिबो आ जेतिकी दरकार सेतिकी लिखिया पड़ियो ताटु कम हेले असुविधा बेसी लिखिले आपनकर सब पेपर सारिया पे टाइम होबो सो टेक डाउन डिजिटल एज रेलेवेंस ता देरे गोटे लाइन आपण एक्सप्लेन करके लिखंतु टू एक्सप्लिसिटली recognize and incorporate to explicitly recognize and incorporate provisions for electronic evidence to explicitly recognize and incorporate provisions for electronic evidence, comma, ensuring its admissibility and authentication in court. Ensuring its admissibility and authentication in court. एठी आउ आमे तार सेक्शंस को जाउनु सेटा जतले आमे सेक्शन वाइज स्टार्ट करियो सेतले देखियो ओके एबे जो आपनकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अछि तार एडमिसिबिलिटी तार ऑथेंटिसिटी तार सर्टिफिकेशन ए सब जिंस केमति कोन चेंज अछि टू एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज and incorporate provisions for electronic evidence ensuring its admissibility and authentication in court. Second point है third point जोटा गोटे major problem थिला Indian Evidence Act रे although सेटा भी गोटे किछि मात्रा थिला but it was not very effective. Okay कौन any evidence act or any evidence law it should be okay having very strong provisions for protection of the witness protection by provision proper दरकार आपनकर ओके तो एटा हला तार थर्ड पॉइंट दैट इज विटनेस प्रोटेक्शन तो इंडियन एविडेंस एक्ट जहा थिला एबे जेडा टिके बेटर और मोर ओके वेल रिप्रेजेंटेड इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम सो विटनेस प्रोटेक्शन एटा हला थर्ड ऑब्जेक्टिव आपण कहि परिबे और थर्ड इंपोर्टेंट ओके गोल ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज विटनेस प्रोटेक्शन ओके विटनेस प्रोटेक्शन एटा थर्ड पॉइंट रे लिखंतु गिव द सब हेडिंग एज विटनेस प्रोटेक्शन तो मुसे मॉडल आंसर कथा कहउतली क्विकली टेस्ट सेथरे ए जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स पूरा बेसी इंपोर्टेंट तापर आपण तो बुझी की अछंती वंस आपण बुझी गले ता अंडर रे कोन आपण लिखिबे सेटा आपण निजे ताको ठीक लिख पारि पूरा मॉडल आंसर को घोषिबार किछि दरकार नै ए हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स पूरा जानले बस तापर आपण निजे ताको कर दे पारि ओके आउ केतेटा जिंस फॉर expanding your legal knowledge for example in each and every question से आपणकर relevant legal maxim देछि you see कोनोसी टेक्स्ट बुक आपण खोजंतु ए सबु कांसेप्ट रो लीगल मैक्सिम देई नथे कना सेमिति जदी देबे बही बहुत मोटा हे जो इट विल रन इनटू वॉल्यूम्स ओके तेणु आपण जदी वॉल्यूम्स रे बहुत अधिका जनरली टेक्स्ट बुक पिला माने पढ़िया पई पसंद करंतिनी एकेडमिशियंस जो माने रिसर्चर्स ताको कथा अलगा ओके
फॉर एग्जांपल मु एबे आपन पचारिबी कि आपन कॉन्स्टिट्यूशन चलची ओके आपनकर आशुतोष सर नौचंदी तो कॉन्स्टिट्यूशन रे सबुठु भल बही कौन फॉलो करिया पे आपनकर अलग अलग सब मत थिबो किए कहे मु वीएन शुक्ला फॉलो करथली ठीक अछि किए कहे मु आउ कोन फॉलो करथली बट सबुठु जदी मु जति की बुक्स रा पढिची ओके कि आपनकर के जन तो एमती भी कहे कि हमें स्पेशली ओजेएस पॉइंट ऑफ व्यू रू हमें लक्ष्मीकांत फॉलो करथलु जोटा कि बेसिकली सिविल सर्विस ओके पैसे बहीटा बहुत कम जन कहे हमें एमपी जैन फॉलो करू ओके कहीं प्रथम से बहिर केते मोटा सेटा ही देखला बेलू ओके आउ पुणी अलग बही सब अच्छी देर आर बुक्स इन वेरियस एडिशंस लाइक दुर्गा दास बसुंकर अच्छी ओके डीडी बसु तांकर शॉर्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 3 or 4 वॉल्यूम्स आउ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सीधा 8टा ना 14टा एमती कोन वॉल्यूम्स अच्छी ठीक है तो कहीं कहूँ कथाटा बहुत अधिका ओके आपण जानवे पढ़े ठीक अच्छे किंतु लिखला बेले यू हैव टू राइट टू दी पॉइंट जी दरकार से मॉडल आंसर आप देखुं ओके तो ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रे यू आर गेटिंग वन लीगल मैक्सिम रिलेटेड लीगल मैक्सिम इज इट पॉसिबल आप कॉन्सेप्ट वाइज सब लीगल मैक्सिम मन रखिए नुह बट मो जदि सबू थे एवरी आंसर मॉडल आंसर मत यही टाइप मिल आस्ते आस्ते इट बिकम्स ए हैबिट जोटा कि मोर कॉम्पिटिटर्स अपेक्षा मोर मार्क मेन्स रे बढ़ेदेव ठीक सेमती इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन तो चलो सीटा मत डायरेक्ट भी मिल जाए ओके एंड अदर थिंग्स आर एग्जांपल्स कोटी दे देला प्रॉपर केस लॉस ओके से गुड़ा भी आपन को मिल जाउछ एनीवे विटनेस प्रोटेक्शन हैला नंबर 3 सेटा लिखंतु तार वन लाइन टू एनहांस सेफगार्ड्स फॉर विटनेसेस नहले आमर तो जानिचु आमर आगुरु व्यवस्था कौन थिला एमती नो एबे बहुत चेंज हो गलानी विटनेस को मारदेवे ओके तो डरा हबो ताकू कोर्स करा हबो जदि से मानिगला भलो चुप हे जिवो जदि न चुप हैला ही विल बी एलिमिनेटेड ओके से जो कोठी हमर किंतु बहुत गुडे एग्जांपल्स अछि बट सबुटु एबे आखि दृष्टि एग्जांपल हैला आपनकर दैट फर्स्ट नेम लोकर मने पड़नी दैट in that murder case okay of I think his brother की किए गोटे some पाल थिला ना से तार जो विटनेस थिला ताकू भी जो अतीक अहमद केस रे राइट ताकू गोड़े गोड़े की मारले ता संगे तार जो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर स्टेट दे थिला ओके ताकू भी से गुंडा माने विटनेस को एलिमिनेट कर देले विटनेस को एलिमिनेट करू करू आपनकर ताको जो सिक्योरिटी दिया आइतला स्टेट द्वारा से भी दे आल्सो वर किल्ड ठीक है तापर तो जायला आपन सब जानछन राइट एमती के बोधे आपन देखि नथिबे लाइव टेलीविजन रे ओके कौन ताको कहबे आपन हम जेतु लॉ ही पढुछु तो मर्डर ही कहबा ओके अवश्य शास्त्र रे ताको तो हमें हत्या बोली कहूनु ताको बध कहू ओके बधकार करा जाए इविल व्हेन इट इज स्लेन ओके इविल टाको जेतले आपण सारुचंती तेतले ताको आपण बध कहउछंती राइट बट एनीवे व्हाटएवर काई कहली कथा काई ना विटनेस प्रोटेक्शन एमती नहीं आजिकली बहुत बढ़ी गलानी बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेथरे किछि चेंजेस आपणकर आनिया पे चेष्टा करिछि एटलीस्ट ऑन पेन एंड पेपर गुडे चेंजेस आसीछि ओके ताकू एबे केते कार्यकारी करा जाई परिबो टू एक्चुअली टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द विटनेस दैट वी हैव टू सी सो टेक डाउन टू एनहांस safeguards for witnesses including options for video conferencing testimony ओके जोटा कि से जो पर्टिकुलर केस कथा कहली सेठी गोटे सेटा गोटे ताकू चली चली कोन नउथिलो हॉस्पिटल ठीक अछि ताकू तो सीधा गाड़ीटा हॉस्पिटल भीतर पसे था कि जा करता एते बाट ताकू चले कि कहीं नहीं राइट बहुत बड़ जदि क्रिमिनल अच्छी कि किए गोटे एमती क्राइम करछि जोटा कि सोसाइटी रो सोल को ही सेटा हर्ट करिछि तो कॉमन लोक भी चाहउछंती कि ताकू यू नो जेमिति भी हो एलिमिनेट करा जो के न कले आमे जाई बड़े बड़े मार दो से केसेस रे आपण ओके से
केमिति कोन आनिबे से जो accused को और in even in many cases जोटी कि witness को protection दिया है accused is very powerful witness जदि घरु बाहर होची गोटे safe place रु बाहर होची ताको risk रहउची ओके तेनु जो physical presence आगुरु दरकार थिला कोर्ट सामना रे आसी कि physically present रहइबो आ कहइबो से जिंसटा that we will see एबे कोन चेंजेस हेची once we study that to enhance safeguards for witnesses including options for video conferencing ए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टर्म टा हमें बहुत थोड़ा लिखिबा एई एक्ट रे तनो वीसी लिखि दियंतो साइड रे ओके पर्सनल नोट्स बनेबे आपण निज हिसाब रे ताको मॉड्यूलेट करि परिबे कमा इंक्लूडिंग ऑप्शंस फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्टिमनी including options for video conferencing testimony and anonymity 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 means ना रिवील हबनी परिचय रिवील हबनी anonymous है कि ओके विटनेस को anonymously रखा जाई पारे राइट जज विल नो बट पब्लिक मे नॉट नो anonymity in sensitive cases okay author dekhi diyantu point number 3 witness protection to enhance safeguards for witnesses including options for video conferencing testimony and anonymity in sensitive cases eta hala third point okay tapare point number 4 that is expert testimony okay to khali chela to setare changes kon hoich okay what changes have been done indian evidence act में देखिए जो expert opinion okay सेटा निर्दिष्ट पर्टिकुलर एरियाज दे देची से एक्सपर्ट सेही एरियाज रो ओके जनरली हेतिबो कि सेही एरियाज रे एक्सपर्ट टेस्टिमनी जनरली एक्सेप्टेड हबो बट एठी जेहेतु एबे आउरी टेक्निकल जिंस आसी जिवो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपनकर डिजिटल फोरेंसिक्स ठीक अछि आगुरु कोन आपनकर फिजिकल फोरेंसिक्स जोटा आपनकर थिला डीएनए टेस्ट हला एगुडा हला सेगुडा सब आपण एडमिट करथिले ओके एबे साइबर फोरेंसिक्स कि डिजिटल फोरेंसिक्स कि गोटे वीडियो बनै दैछि से वीडियोटा एआई जनरेटेड नुह तो सेठी एक्सपर्ट टेस्टिमनी किए दो तो सी जे ओके साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट थिबो ओके से माने देबे तेनु तारो more and more areas of expertise have been included in that hela so fourth point रे लिखंतु heading दियंतु expert testimony expert testimony okay how one line लिखंतु सेतरे to strengthen the role and credibility to strengthen the role and credibility hela role और credibility के अंडरलाइन करन एटा भी गोटे बहुत इंपोर्टेंट स्किल जेतु आपण नुआ बैच रे अछंती नेक्स्ट ईयर पे प्रिपेयर करछंती you imbibe this skill from the first class itself कि important words or phrases जहाँ ऊपर आपण को फोकस दबार अछि सेगुडा अंडरलाइन हबो to strengthen the role and credibility जोतरे role और credibility दीटा मते अंडरलाइन करिवार अछि of expert witness to strengthen the role and credibility of expert witness by emphasizing their qualifications and by emphasizing their qualifications and expertise in respective fields qualifications and expertise in their respective fields in their respective fields
ओके सेटा हला आपनकर विटनेस टेस्टिमनी तापर नेक्स्ट नो देयर वर लॉट ऑफ जदी इंडियन एविडेंस एक्ट देखिबा सेठी हमें केतेटा जगह रे पाउचू कि द डेफिनेशंस और द एक्सप्लेनेशंस सेगुड़ा जिनसटा को पूरा क्लियर करि परनी माने एम्बिग्युइटी किछि थिला आपनकर राइट तो एठी कोन क्लियर गाइडलाइंस आपनकर दिया हिच सो द एक्सप्लेनेशंस एंड overall the language of the okay adhiniyam has been made more clearer okay or more clear so that कोनोसी टाइप रो आपनकर ओके द्वंद्व किंबा कोनोसी टाइप रो कंफ्यूजन सेथरे रहइबन ठीक अछि सो पॉइंट नंबर 5 देखंतु क्लियर गाइडलाइंस okay clear guidelines number 5 तो तार वन लाइन लिखि दियंतु टू एस्टैब्लिश क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस क्लियर और कॉम्प्रिहेंसिव को अंडरलाइन कर दे टू एस्टैब्लिश क्लियर एंड कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस बैलेंसिंग प्रोबेटिव वैल्यू balancing probative value PROBATIV probable ru probative okay probative value with fairness and protection of rights with fairness and protection of rights with fairness and protection of rights okay to establish clear and comprehensive guidelines for the admissibility of evidence balancing probative value with fairness and protection of rights ठीक अछि तमरे किछ एम्बिग्युइटी जेमति रहइबन ओके तेणु सेकेंड पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव रिटन ता माने बुझचंत बैलेंस करूची प्रोबेटिव वैल्यू ओके प्रोबेटिव वैल्यू कोन होई केस रे हमें प्रिजम्पशंस जेतेबेले सेठी की जीवा सेतळे हमें डिटेल से पढिबा बहुत जगह रे कोर्ट प्रिज्यूम करे केते जिंस ठीक अछि आगु को सेटा रिपोर्ट भी करा जाई पारे ठीक अछि तेणु अच्छा प्रिजम्पशन करछु ना सेटा तो हेई पारे और न भी हेई पारे ओके बट इरिपोर्टेबल प्रिजम्पशंस भी हमें देखिबा आगु ठीक अछि तो से प्रिजम्पशन करिका किंबा जो प्रोबेटिव वैल्यू अछि along with that fairness and protection of rights dita balance होबा बुझी पाले तो you know that no one is considered okay as convicted or as guilty okay till all the proof you know and the court basically convicts him so se parjanto se free loko okay in the sense that the law will consider him innocent until and unless he is proved guilty Hello. Then there has to be a balancing of the probative values. What are the probabilities? Okay. केते पर्यंत कि को लेवल पर्यंत ओके आपण गोटे जिंस को ओके अज्यूम करि परिबे प्रिज्यूम कर परिबे बिकॉज़ आपण यदि सब जिंस प्रिज्यूम करिया स्टार्ट कर देले ताहले इट मे नॉट बी फेयर टू द अदर साइड सो बैलेंस करिया पड़े सेटा से कहूची balancing probative value with fairness and protection of rights. Is it clear? Eta hela point number 5. तापरे next number 6 आपण टेक्नोलॉजी के यूज करचंदी एथरे दी तीनटा लाभ होची कोन अच्छा एबे से लोको को आपण ट्रांसपोर्ट करिक नै थांते अक्यूज को कोर्ट को ठीक अछि कोर्ट वैन रे सेठरे पुनी अलगा प्रॉब्लम्स अछि फिजिकल से दौड़ी पळैबो करे
ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଗୁଳି ମାରିବାକୁ ପଡିବ, ଠିକ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ଅଦରୱାଇଜ କଣ ହବ ନା କେବେ କେବେ ଯଦି ଡ୍ରାଇଭର ଠିକ ରେ ଚଲଉ ନଥିବ ଗାଡିଟା ଉଲ୍ଟି ବି ପାରେ। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛୁ? ଗାଡିଟା ଉଲ୍ଟି ପାରେ ମାନେ କଣ, ଗାଡି ପଲଟେକି, ଠିକ ଅଛି। ତାମାନେ ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପଲିଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଓକେ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟିସ ବହୁତ ଜାଗାରେ सोसाइटी डिमांड करे, ठीक है। सोसाइटीर गोटे लेवल को से पहुंची गलानी टॉलरेंस रो, आउ से टॉलरेट कर पारनी जेतले किछटा एमती जिंस होची जोटा कि सोसाइटीर ओके कॉन्साइंस को ही पूरा हर्ट करूछ, राइट। सो देयर वाज दिस गैंगस्टर कॉल्ड विकास दुबे, ठीक है। से बाबू कौन कले, सो ही वाज ए क्रिमिनल, गोटे बहुत बड़ गैंगस्टर थिला से उत्तर प्रदेश रो, जहाँ तो करथुला मरामरी ये सब जहाँ भी, he killed a lot of police officers, ठीक है। जो माने जाइथिले ताको अरेस्ट करिया पई, सो सी आउ से ता लोक माने ताको पुलिस ऑफिसर्स को मार देले, धरा पड़ला तापर, ठीक है। तो ताको गोटे जगह रु आ गोटे जगह को निया होतला जेल को। तो मझिरे कौन हला ना, ड्राइवर तो सोई पड़ला कि कौन हला, से गाड़ी उल्टी गला, ठीक है। एबे गाड़ी जेतले उल्टी गला ताको गोटे चांस मिलला पळेया पई, तो से पळेया पई चेष्टा करथुला, ओके। आउ गोटे क्रॉस फायर रे ओके पळेया पई चेष्टा करथुला, पुलिस अटकेला, से गुली मारला, पुलिस भी गुली मारला, एंड ही डाइड। बुझ पाले फिल्म्स रे जेंति आपण देखन, राइट। सो सेटार गोटे पुनी रिस्क रहउची, ओके। फिजिकली जण को आपण नै कि जिवे, तेनु यूजिंग द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जदि एंती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमें देखलु सेई टाइप रो जिंस जदि हमें करि परिबा, ताले तीन चारटा लाभ होची। गोटे तो हला कि आपण एई सब जिंस हबन, नंबर 1, ओके। सेकेंड हला आपणकर कॉस्ट बहुत कमी जीवो। एबे ताकू नहीं कि जीवा पई 20टा पुलिस वाला दरकार, 2टा गाड़ी दरकार, पेट्रोल पड़ियो, ताकू सबू जेल्स रे एबे वीसी रो फैसिलिटी रखाई, वीडियो कॉन्फ्रेंस सेठी ताकू देखाई, सेठू ही से तार जा कहया कथा कोर्ट को कहू, पैसा भी बंचिला, ता लाइफ भी सेफ रहला, ठीक अछि। आउ एई टाइप रो मेसी सिचुएशन आसीबो, ओके। सो पॉइंट नंबर 6 हेडिंग लिखंतु एफिशिएंट प्रोसीडिंग्स, ओके। एफिशिएंट प्रोसीडिंग्स, नंबर 6 एफिशिएंट प्रोसीडिंग्स। ठीक है, सो प्लीज टेक डाउन efficient proceedings कौन ए केस रे स्पेशल to expedite, okay, take down, to expedite legal proceedings, to expedite legal proceedings by streamlining the presentation, to expedite legal proceedings by streamlining the presentation and evaluation of evidence and evaluation of evidence, comma, particularly in the digital realm, REALM, particularly in the digital realm, okay. So these will be the advantages. Efficiency, what do you mean by efficiency? Your time will be saved, number 1. Your resources, money, manpower, etc. will be saved, number 2. Okay, there will be less chances of these accused running away or they being assaulted by their enemies or even by the public also, okay. यदि से टाइप रो कोन से क्राइम करथिबे, बुझ पाले इति बहुत एग्जांपल्स अछि। किछि वर्ष आगुरु यू नो दैट हैदराबाद सेक्सुअल असॉल्ट केस, जोठी गोटे डॉक्टर किंबा मेडिकल स्टूडेंट, ओके, सेंति रिलेटेड टू हेल्थ केयर सेक्टर, ओके। तो ताकू
she was assaulted ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଧରା ହେଲା ତ ପବ୍ଲିକ ର ଏତେ ରାଗ ଥିଲା କି ତୁମେ ତାକୁ ଧରି କାହିଁକି ଦେଲ ଠିକ ଅଛି ତ ତାକୁ ଧରିବାର ନଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତ ତ ଏତେ ପ୍ରେସର ପଡିଲା ପୋଲିସ ଉପରେ କି ୱାଟ ଏଭର ସେ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ତାକୁ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଆରପିସି କରିକାରେ ଆପଣ ପଢିବେ ସେଟା ଓକେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ବିଏନଏସଏସ ରେ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ପାଇଁ ତାକୁ ନିଆହେଲା ଓକେ ସେ ଯୋଉ ଦି ଜଣ ଥିଲେ ବୋଧେ ମୋଷ୍ଟ ଓକେ ସୋ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପୋଲିସ ବାଲା ଥିଲେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ତ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ନିଜେ ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ତାଙ୍କର ଏତେ ସାହସ କି ସେମାନେ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ିଆକି ପଳେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେ ଟ୍ରାଇଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ବଟ୍ ସେମାନେ ରହିଲେନି ତାପରେ ଗୁଳି ବାଜିକି ସେମାନଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସୋ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ନ ହଉ ଓକେ ତ କେତେ ତାକୁ ଆପଣ କମେଇ ପାରିବେ ତ ୟୁଜିଂ ପ୍ରପର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓକେ ଏ ଜିନିଷଟା କରିହବ ତ particularly in the digital realm এটা হলো point number 6 point number 7 that is one of the fundamental principles of any law that is it has to promote fairness and justice ঠিক আছে point 7 fairness and justice okay fairness and justice so ଏଥିରେ point ଲେଖନ୍ତୁ କଣ fairness and justice basically Indian Evidence Act ରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ କହିପାରିବେନି it was basically biased or skewed towards one side ଠିକ ଅଛି both sides ପାଇଁ ସେଟା ଆହୁରି ବି fairer କରା ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯୋଉଟା କି BSA ରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି କରିବା ପାଇଁ so take down to promote a fairer FAIRER to promote a fairer and more just legal system by clarifying the burden of proof and ensuring equitable treatment of all parties by clarifying the burden of proof and ensuring equitable treatment of all parties okay तो आमे दीटा जे बर्डन ऑफ प्रूफ को जेतले आमे जिबा એટલે અમે સેક્શન્સ હિસાବରେ પઢିବା તો ଆମେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ତ ବର୍ଡନ ଅଫ ପ୍ରୁଫ ଅଛି very very important concept in evidence laws ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା onus of proof ଅଛି କଣ ତା ଭିତରେ difference that time we will see burden of proof and onus of proof ଠିକ ଅଛି ତ generally କଣ burden of proof ଟା କାହା ଉପରେ ଥାଏ anyone ଯାଙ୍କର knowledge ଅଛି Prosecution of ହଁ ओके तो जी कहूँ सपोज मु एलेज करुच्ची आपण मोर चॉकलेट नहीं गले तो ए क्या काम प्रूफ करवा कि सतरे जी जनकर आउ जड़े चॉकलेट नहीं जाइए जी एलेज करुच्ची मु कहूँ आप चॉकलेट ना तो मत किसी प्रूफ देवा पड़ो तार मो चॉकलेट यही टाइप रा कि मोर वीडियो एविडेंस अच्छी सीसीटीवी एविडेंस अच्छी व्हाटएवर राइट बट तार एक्सेप्शंस भी अच्छी एक्सेप्शन किए कहि परिबे जोटी की accused ऊपर burden of proof थाए ताकू प्रूफ करे पड़िबो मु करिनी ओके sir रादर plea of दैन alibi आउ कोन को एक्ट रे पर्टिकुलरली एटा एई थर को एटारे सब वर्ष कागु ना कागु एटा पचारन देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक ओके और स्पेशल आपनकर स्टैट्यूट्स अच्छी एक्ट्स अच्छी जोटी की burden of proof टा accused ऊपर पड़े ताकू प्रूफ करे पड़िबो कि मु करिनी ओके पॉक्सो गोटे एग्जांपल तार ठीक अछि जो ओके पिलांको अगेंस्ट रे ठीक अछि क्राइम्स करिका होची सो दैट इज डेल्ट अंडर
पॉक्सो एक्ट तो से पॉक्सो एक्ट रे ओके बर्डन ऑफ प्रूफ टा हला का ऊपर ऑन द अक्यूज को प्रूफ करे पड़ियो मु करनी राइट जनरली प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करे पड़े ओके विथ इरेफ्यूटेबल एविडेंस दैट सीए करिची ओके बट एटा गोटे आउ कोन आउ भी एग्जांपल्स अछि देखि कि कहबे सेटा ओके सो एनीवे तो ये जो फेयरनेस और जस्टिस आपण कहउचंदी सो एविडेंस ओके लॉ हिसाब रे जुडिशियल सिस्टम टा आउरी फेयरर हो ठीक अछि जो बर्डन ऑफ प्रूफ रो कांसेप्ट टा दैट हैज टू बी प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूटेड को जगह रे का ऊपर सेटा रहबा कथा एंड जोटा हमें ओनर्स ऑफ प्रूफ रे भी देखिबा आगु जाइके ओके द शिफ्टिंग ऑफ दिस बर्डन सेटा एमती परमानेंट सब बेले समस्त यू नो इन मेनी केसेस न थाए इट शिफ्ट्स ठीक अछि एंड सेटा हला फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन बर्डन एंड ओनर्स बर्डन ऑफ प्रूफ और ओनर्स ऑफ प्रूफ भीतर बट एनीवे सेटा हमें देखिबा जते से टाइप ओके सो फेयरनेस एंड जस्टिस नेक्स्ट नंबर 8 एटा गोटे रिपीट पॉइंट आपण कहि परिबे बट स्टिल देन जेतु हमरो एथरे गोटे पर्टिकुलर टर्म हमें यूज करबा डिजिटल सिग्नेचर सेथि पई ए पॉइंट टा इंपोर्टेंट अछि पॉइंट नंबर 8 टेक डाउन टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटी टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटी गोटे छोट एग्जांपल दोची आपनकर जो एबे सब आसुची जो सर्टिफिकेट्स एबे तो गवर्नमेंट ऑफ एबे हमर स्टेट गवर्नमेंट कोन कहि कि जो इंपोर्टेंट सर्टिफिकेट्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडर रे जोड़ा आसुची कि केतेटा अलगा डिपार्टमेंट अंडर रे जोड़ा आसुची फॉर एग्जांपल अपन कास्ट सर्टिफिकेट हे गला ओके अदर थिंग्स आपन को तहसील जिया पे पड़िबन ठीक अछि सब ऑनलाइन हे परबो एबे भी जदी देखिबे कास्ट सर्टिफिकेट जो आपनकर बाहर करछन एग्जाम पई कि अलगा कोई पे अपन देखिबे सेठी आ फिजिकल सिग्नेचर होनी सब डिजिटल सिग्नेचर होची ओके जे तहसीलदार अछि कि जे भी यू नो जहां को से पावर टा मिलिची साइन करिया पे से डिजिटली साइन करछन ठीक अछि एबे तार गोटे इश्यू रहउची डिजिटल सिग्नेचर अपन ऑथेंटिकेट केमति करिवे ओके तो तार सब पर्टिकुलर पास कीज अछि जोड़ा कि ऑनलाइन रे सेटा आपण कर परिवे कि ए डिजिटल सिग्नेचर ता ऑथेंटिकेटेड कि नहीं एबे इनकम टैक्स नोटिस आसुची ओके एबे कोन हे गला नेमलेस आउ फेसलेस आपनकर प्रोसेस ठीक अछि तो आगुर कोन होतिला आपण धरंतु आपन एड्रेस भुवनेश्वर रे कि कटक रे कि संबलपुर रे सेही जगह रो जे टैक्स अथॉरिटी सी आपनकर ओके जहाँ टैक्स रिटर्न हो कि जहाँ भी हो से माने देखुदिले व्हाटएवर तापरे जेतु मु सेम सिटी रो देखुची ताले मु गोटे आपन कॉल करी कहबी नेने आपन ऑफिस को आसंतु देखा करंतु आपन प्रॉब्लम अछि ओके सेउठू करप्शन रो वेबटा स्टार्ट हुए राइट एबे कोन होची नेमलेस एंड फेसलेस असेसमेंट्स आपण इनकम टैक्स रिटर्न दे देले ओके संबलपुर रो दैछंती सेटा चेन्नई रे जणे ऑफिसर ताको चेक करछन सी जानना एटा कोडू चेन्नई रो आछि कोन जस्ट खाली बाकी क्रेडेंशियल्स आपण बाकी डेटा देखो कि ना फा छोड़ा किसी देखो ताको देखो तो सी तक एसेस करके सी बाहर कले कि हां ई चारटा भूल अछि कोन अछि तो आपण को ई नोटिस आस जाउछि मेसेज भी आस जाउछि आ आपणकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रो वेबसाइट रे भी आस जाउछि आपण को ईमेल रे भी जाउछि ओके तो केते एथरे लाभ हैला गवर्नमेंट को आउ सोसाइटी को फर्स्ट तो कि आपन कंप्लायंस आपन डायरेक्टली सेठी करिवे एई जिंस नाही अकॉर्डिंग टू फॉर्म 16 आपन एति की हबा कथा इंटरेस्ट आपन देइचंती किंतु ओके इनकम टैक्स रिटर्न रे इंटरेस्ट ता कमे देइचंती ओके तुम ताको ठीक कर दे सर लगम किछि ने जदी फाइन कोन दवा कथा फाइन टा ऑनलाइन पे कर दे एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ठीक अछि अदरवाइज इफ यू पर्सनली गो यू नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स राइट तो सेही जिंसटा एबे हम स्टेट गवर्नमेंट भी करूचंती ए 2-3 दिन हला आछि कि बहुत गुडे सर्टिफिकेट्स आपनकर आगुरु भी ऑनलाइन होतला केते गुडे जिंस बट एबे प्राय बहुत गुडे जिंस ऑनलाइन हेचिबो तो टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटी बट तार कंसर्न्स भी अछि फॉर्जरी हे पारे ए जो डिजिटल सिग्नेचर घरिका ताकू जने फॉर्ज कर दबो कि ताकू ओके किछि गोटे यू नो गोटे साइबर अटैक टाइप रो आपण कहि कि कोन
सेथरे किछि मैनिपुलेशन कर दे परियो राइट सो टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटी विथ जहाँ सिक्यूरिटी जहाँ ये सब जिनस दरकार तो अंडर टेक्नोलॉजिकल अडैप्टेबिलिटी टेक डाउन टू एंश्योर दैट इंडियन लॉ कीप्स पेस विथ to ensure that Indian law keeps pace with technological advancements, to ensure that Indian law keeps pace with technological advancements, by incorporating presumptions related to electronic records, underline karantu electronic records, related to electronic records and digital signatures. So electronic records underline karantu, digital signatures underline karantu. Presumptions related to electronic records and digital signatures. ଆପଣ notes जहाँ मु डाकुची that is the most important part. मु generally dictation okay आपन को करिबिनी but गोटे गोटे point ता आपन को बुझिबार अछि. Okay that is the 1 or 2 lines जोटी जहाँ दरकार हबो. So सेटा आपन लेखि की ताकू पर्सनल नोट हिसाब रे यूज करि परिबे that will solve the purpose. मु जो जो पॉइंट्स वा डिक्टेट करूची एट द एंड ऑफ द कोर्स सेतिकी पॉइंट्स रो जदी आपनकर नोटटा अछि परीक्षा पई प्री मेन पई सेटा सफिशिएंट ओके तापरे नेक्स्ट नंबर 9 कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन कोडी कोन चेंजेस करिवार थिला ओके आउ कोडी कोन कंसोलिडेट करिवार थिला सो पॉइंट 9 कोडिफिकेशन कोडिफिकेशन कौन ना केते गुडे जिंस जोड़ा अनकोडिफाइड थिला हमर एई एविडेंस लॉ रे ताकू कोडिफाई कराला ओके सो टेक डाउन पॉइंट नंबर 9 कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन कोडिफिकेशन एंड कंसोलिडेशन लेखन दोतरे कंसोलिडेशन कौन ना रिलेटेड टू पर्टिकुलर एरियाज अलग अलग जगह रे जदी आपण को रूल्स उडा थिला ताको गोटे जगह रे आपण आजन की ओके कंसोलिडेट करछन नॉर्मली कोन एटा हमें देखिदिलु काली एटा बेसिकली यूज हुए कोथरे ना जोडा संहिता जोडा अछि कोड्स गुडा अछि ओके बट एठी भी हमर किछटा एविडेंस लॉस को अलग अलग लॉज रु आनी की गोटे जगह रे रखाला जोडा की इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेही जिंसोडा सेही पर्टिकुलर जिंसोडा नथिल तो टेक डाउन to consolidate and codify existing laws relating to evidence to consolidate and codify existing laws relating to evidence comma improving clarity accessibility and coherence to consolidate and codify existing laws to consolidate and codify existing laws related to evidence comma improving clarity comma accessibility improving clarity comma accessibility and coherence COHERENC coherence माने गोटे आपण कहि पारे गोटे और रिलेटेड थिबो लॉजिकल थिबो कोहेरेंट थिबो मिसी ओके accessibility and coherence so eta hela apanଙ୍କର ऑब्जेक्टिव और एम नंबर 9 आउट लास्ट हला आमे देखिबा केते गोटे जिंस हम एमिति करछु जोडा कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रे प्राय देश जो माने टिके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड अछंती डेवलप्ड देश ओडा से माने भी सेमति करन इनफैक्ट आई विल से दैट आमे एक्चुअली हम एविडेंस लॉ टा बहुत मॉडर्न हे गला है राइट even in many of the developed countries okay तांकर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस टाकू से माने
आमर भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे जो प्रोविजन्स अच्छी एते एडवांस प्रोविजन्स तांकर भी नहीं ठीक अच्छे तांकर बहुत गुटे जगह यू टेक फॉर एग्जांपल योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ठीक अच्छे आमर कौन इंडिया रे यूपीआई हैज बिकम यूबिक्वस ओके यूबिटस इन द सेंस दैट आपण जहाँ भी कर 10 टंकार जिनस रु नहीं कि यू नो जिते आपण जो जिनस किणुछंती आपण मोबाइल फोन रे ही आपणकर पेमेंट हो जाउछ इनफैक्ट एबे तो जो माने ड्यू टू वेरियस सर्कमस्टेंसेस से माने किछ लाइक बेगर्स करिका भी हेले से माने इन मेनी टेंपल्स ओके तो 10 टका 20 टका किसी चेंज रखु नांती से माने भी क्यूआर कोड बने की रखछन ओके सो इट बिकम्स सो इजी आपण सबुठु बड़ बड़ डेवलप्ड कंट्रीज की जानतु यूएस रे एवरीथिंग हैज टू बी डन बाय कार्ड जर्मनी रे से एका जिंस तांकर ए कांसेप्ट ओके एते एडवांस लेवल को एते ग्रैन्युलर लेवल को एते ग्रास रूट लेवल को से नहीं नहांती ओके आमर जहाँ जहाँ अभ्यास हो गलानी आपण एबे यूएस की जर्मनी जब बुलिया पे भी जिबे सेतेबेले भी आपको बहुत अनकंफर्टेबल लगे ठीक अच्छे इधर एग्जैक्ट कैश दिंतु और कार्ड स्वाइप कर राइट कार्ड स्वाइप रे चार्जेस अच्छी एंड अदर थिंग्स आर देयर ठीक अच्छे कैश तो एग्जैक्ट सब किए धरिकी बुलबनी बट से कॉन्सेप्ट तांकर एपर्यंत यूपीआई टाइप आसे और से कॉन्सेप्ट एते भलो कि एबे पाखापाखी देश गुड़ा अडॉप्ट कले यू गो टू दुबई बहुत जन आप देखिए दुबई पड़ुछन एटलिस्ट बुलाबुली करने कहीं दुबई रे आपन करेन्सी दरकार ही नहीं आपण निजर ओके बैंक अकाउंट रे यदि अच्छी पैसा एटी इंडिया रे बस तो आपण आराम रे जे बुलाबुली करके आसे किछि कोटी आपण कन्वर्शन करिया दरकार नहीं यूपीआई से माने एक्सेप्ट करछंती सेही आपणकर तांकर किछि गोटे खाली ऐप आपण डाउनलोड करिया अछि जतरे यूपीआई एक्सेप्टेड होउची सेही बैंक अकाउंट रो आपण निज करेन्सी रे पे करछंती एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव डन दैट ठीक अछि और सेटा गोटे बहुत बड़ केस स्टडी ऑन लार्ज स्केल ओके फाइनेंशियल इंटीग्रेशन ठीक अछि देखुनांती हमर केते यू नो माने अभ्यास हे गलानी सेटा आपण दीटा छोट लेवल रे देखंतु एटी हमर शहीद नगर सामना रे दी जण गुपचुप वाला अछन जणे यूपीआई एक्सेप्ट करूची जणे यूपीआई एक्सेप्ट करूनी ठीक अछि यूपीआई जे एक्सेप्ट करूनी अवश्य मते लागे ता टेस्टा बेटर ठीक अछि क्लासरूम पिला माने तो सबुदिन खाउछन माने जानथिबे राइट ये से रोड रो लेफ्ट हैंड साइड रे ठिया होची बट तार भिड़ रिलेटिवली कम एज कंपेयर टू दिस गाय हु इज स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड जस्ट अपोजिट टू द सेंटर तार बेसी भिड़ कौन पाई से पेमेंट टा यूपीआई रे मु 10 20 टका खाइबी कि 25 टका खाइबी के जो 50 टका भी खाइदेबे राइट से सेटा किए सेति की यू नो कैश धरी किए बोलियो राइट तो ऑनलाइन पेमेंट जे नउची सेठी खाओ राइट आ बहुत जण बहुत होटल्स एंड ऑल से माने भी से कांसेप्ट को आसिले बुझ पले तो सो एठी हमें कहीं डिस्कस करूछु ना जो जगह रे स्पेशली एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आपनकर कंसीडरेशंस रहउछु से जगह रे जदी आपनकर लॉ एविडेंस लॉ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स रो अछि ओके ताहले आपण कहि परिबे कि इट बिकम्स इजियर सो 10th point or last point that is global standards जो प्रोविजन आमे बीएसए रे रखिजु you can compare it with other developed countries of the world developing countries of the world so से लिखि दियंतु गोटे लाइन to align Indian evidence law to align ALIGN to align Indian evidence law to align Indian evidence law with international best practices and standards with international best practices and standards enhancing its credibility and effectiveness with international best practices and standards comma enhancing its credibility and effectiveness हला हमरो इंडियन एविडेंस लॉ रो क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस दीटा बढ़िबो क्रेडिबिलिटी कोन ना मान्यता समस्त मान्य ठीक जेटा इंडियन लॉ अंडर यू नो बीएसए ताले एटा प्रॉपर सेटा से माने नै ठीक अछि क्रेडिबिलिटी
विश्वसनीयता, right, and effectiveness, right. So that the law is effective, proper सब steps ହେଇଥିବ, okay. So international cases जोड़ा होची किंबा जोटी मु कहली extra territorial, okay, जो जगह रे सेमिति cases होची से जगह रे भारतीय साक्ष्य अधिनियम जेहेतु बहुत गोटे एडवांस्ड आ गोटे recent modernized law, adaptable law, okay, and it matches the global standard. So सेटा आपनको इंडियन एविडेंस लॉ रो क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाउछ. So underline credibility and effectiveness, okay, underline करंतु ए दुटा फ्रेज, okay, got it. So now take 2 minutes ए 10 टी पॉइंट पढंतु. एठी हमें कोन कहू व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, एम्स कोन, ओके, हमें पर्टिकुलर सेक्शन वाइज जाउनु, ओवरऑल एम टा हमें कहू कौन चेंजेस अच्छी और कौन एम करुची आपनकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, okay. So take 2 minutes and go through it, okay. If you have any doubts ask me, else आउ दीटा इंपोर्टेंट जिंस रही जोटा आज हमें कवर करिवा. फर्स्ट एटा आपण देखिले तार ऑब्जेक्टिव्स कोन. नाउ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, that is the comparison, not section by section but overall comparison of Indian Evidence Act and भारतीय साक्ष्य अधिनियम. सेटा गोटे जिंस देखिबा. तापरे चैलेंजेस आउ ना क्रिटिसिज्म सब कोन करा हिची, आउ एमती इतले भलो हितांदा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, से चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म को टिके देखिबा. ठीक है, दिस इज व्हाट बेसिकली we will do, okay, and then we will go to the questions. किसरा questions हमें देखियो. Any doubts in these points जोटा आपण लिखिले, okay, जदि सेथरे किछि डाउट अछि ताले पचरंदु. 10 points you have written. Objective of भारतीय साक्ष्य अधिनियम: modernization, digital relevance, witness protection, expert testimony, clear guidelines, efficient proceedings, fairness and justice, technological adaptability, codification and consolidation, और global standards. Okay, एटा हला तार, these are the objectives or goals or aim, okay, of your भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Next heading दियंतु, मेजर डिफरेंसेस. बहुत डिफरेंस अच्छे, हम गोटे गोटे एतले सेक्शन वाइज जीवा, हम सेक्शन वाइज डिफरेंस भी देखिबा बिटवीन इंडियन एविडेंस एक्ट एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है. So let us see some of the important, okay, differences जदि आपण देखियो. तो सबुठु फंडामेंटल डिफरेंस कोन, एटा गोटे इंटरव्यू क्वेश्चन कि आपणकर जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स करिका अछि तारी रिलेटेड मेजर चेंजेस हेछि, ओके. आगुरु ताको आपण कोन गोटे सेकेंडरी एविडेंस हिसाब रे भाबुथिले, एबे सेटा प्राइमरी एविडेंस हिसाब रे भी एक्नॉलेज करा जाउछि. ओके, सो पॉइंट 1 लिखंतु, inclusion of electronic records. Inclusion of electronic records. Electronic records को मु शॉर्ट रे लिखुछि ER. So number 1, inclusion of electronic records. Okay, so लिखंतु से थरे, okay. So the BSA explicitly includes electronic and digital records. BSA explicitly includes electronic and digital records in the definition of documents. In the definition of documents, comma, recognizing the importance
of electronic evidence in legal proceedings. Hello. So that is the inclusion of electronic records. Eta prathama jinso apanakara jota ki most important. And the particularly apana jibe, okay, electronic records varika ko ebe primary evidence hisabre be niauchi. Okay, Indian Evidence Act re iguda evidence thila. Okay, ete expansive scope tara nathila, but it was mentioned. But it is secondary evidence hisabre taku dekhthile. Okay, तो सी पॉइंट टिके आउरी डिटेल रे लिखिबा इन पॉइंट नंबर 2 हैला क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो प्रथम इंक्लूजन हैला, सेकंड हैला क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सेथरे देखंदु. Okay, the IEA classified electronic records as secondary evidence. Okay, the IEA classified, IEA Indian Evidence Act, okay, classified electronic records as secondary evidence, comma, requiring additional authentication for admissibility. Requiring additional authentication for admissibility. Requiring additional authentication for admissibility. Say evidence टाको कोर्ट रे admit करिया पई ता पई अलगा सर्टिफिकेशंस दरकार थिला, सेटा एबे भी दरकार अछि. ओके, बट सिंप्लीफाई हे जाई. एमिति नो कि एबे दरकार नाही, सेटा भी गोटे क्रिटिसिज्म हमें देखिबा क्रिटिसिज्म. ओके, सो IEA classified electronic records as secondary evidence requiring additional authentication for admissibility. Okay, सेथरे कंटिन्यू करंतु. BSA reclassifies ERs, ER है electronic records. BSA reclassifies ERs as primary evidence, comma, simplifying their admissibility in court. Simplifying their admissibility in court. Okay, बुझी पाले. Point number 1, point number 2, though related, I mean separate points कर देंगे. Okay, now point number 3 को आसंदो. आउ कोन चेंजेस हिच एक्सपर्ट टेस्टिमनी रे कोन चेंजेस हिच. So point number 3 लिखंतु, scope of expert testimony. Scope of expert testimony. तो एक्सपर्ट टेस्टिमनी ऑलरेडी थिला इंडियन एविडेंस एक्ट रे, किंतु सेठी को जगह रे ओके आपण एक्सपर्ट रो ओपिनियन नेबे. ओके, आउ सेटा मान्य हबो कोर्ट रे, सेटा टिके लिमिटेड थिला. जेमति कि इंडियन एविडेंस एक्ट रे ओके आपणकर मेनली कोन हैंड राइटिंग, साइंस, आर्ट, फॉरेन लॉ, फिंगरप्रिंट्स, ओके आर ऊपर बेसिकली से कहउतला. बट एठी कोन तो स्कोप टा एक्सपेंड कराला एनी फील्ड. ठीक है, जो तरह की एक्सपर्ट एनालिसिस दरकार. साइबर फोरेंसिक्स से परे, डिजिटल फोरेंसिक्स से परे, इट मे बी एनी अदर स्पेशलाइज्ड डोमेन. ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी भी है परे. सो जो एक्सपर्ट आसीबे से माने जो इंडियन एविडेंस एक्ट जो फील्ड्स उडा देइतिला स्पेसिफिक फील्ड्स रो, ता छडा एनी अदर माने ताको मिसे कि भी एनी अदर फील्ड्स से हे परिबे. ठीक है, सो टेक डाउन. IEA limited expert testimony. IEA limited expert testimony to specific fields
such as handwriting, such as handwriting, science, art, foreign law, such as handwriting, science, art, foreign law, or finger impressions. Finger impressions. BSA on the other hand, BSA on the other hand expands the scope, to allow expert opinion, to allow expert opinion in any field, in any field requiring expert analysis, requiring expert analysis, okay. So এটা হলো scope of expert testimony has been broadened in ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম। Sir, ঠিক the আছে, chatting এটা to হলো scope of, দেখলে Indian Evidence Act হ্যাঁ limited scope of সেটা কোন? হ্যাঁ limited expert testimony, the IEA limited expert testimony to specific fields, to specific fields such as handwriting, science, comma রইল, handwriting, comma, science, comma, art, comma, foreign law, or finger impressions. দেখিলে? Yes, sir. Okay. So এটা তার third difference ଆମେ ଦେଖିଲେ। Next, let us come to the fourth point. Okay, relating to the language and terminology. କୋଉ language ଆପଣ BSA ରେ use ହେଇଥିଲା? Okay, language ମାନେ not English in that sense. Okay, language ମାନେ ଯୋଉ type ର legal language ଆପଣ use ହେଇଥିଲା। Language and terminology. Okay, so point number 4 ରେ ଲେଖନ୍ତୁ language and terminology. Number 4, language and terminology. So take down language and terminology. Okay. IEA contain terms like lunatic. Lunatic term টা আছে কি নাই? Okay, Evidence Act রে contain terms like lunatic to describe individuals of unsound mind. To describe individuals of unsound mind. সেটা ঠিক কি? যাହାର unsound mind সে হলা lunatic? Okay, not at all. କାର ଅଲଗା ରିଜନ ମେଡିକାଲ ରିଜନ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ସମସ୍ତେ କି ଅନସାଉଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ର ସେମାନେ ଲୁନାଟିକ ନୁହଁ। ଓକେ, ସେମାନେ ଭୟଲେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହାର୍ମ କରିବେ ବୋଲି ସେମିତି ମାନେ ନାହିଁ। କାହାର ମେଡିକାଲ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, କାହାର କିଛି ଡିଜିଜ ଅଛି, କାହାର କିଛି ଅଲଗା କଣ ଅଛି। ଓକେ, ସୋ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୁନାଟିକ ଟର୍ମ ଟା କିଏ ପସେଇଥିଲା? ଆମେ ତ ଲଗେଇ ନଥିଲୁ, ସେଟା ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ 1872 ରେ ଆକ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ। କଣ ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲେ? କାହା ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲେ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ କଣ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେତେବେଳେ? ବିଟୱିନ ଦ ରୁଲର ଆଣ୍ଡ ଦ ରୁଲ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଟାଇପ ର ଟର୍ମସ ୟୁଜ କରିଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଉ ଠିକ ବି କରୁନୁ କେବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଦ ଟୋନ ଆଣ୍ଡ ଟେନର ଅଫ ଦ ଓକେ legal language which is used, right? Lunatic ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ different ଇଏରେ, ମାନେ ଏଟା derogatory basically. You have to consider the rights of those people also who are of unsound mind. Mental health ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବହୁତ ଜଣ ଭାବିବେ କି ତ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଥିବ କି କିଏ ଗୋଟେ କଣ ସିଚୁଏସନ ରେ ପଡିକି ସେ ତାର ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ ଅଛି,
एबे किछि दिन आगुरु यू गॉट द न्यूज कि गोटे इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर से मेंटल हेल्थ इश्यूज जो सुइसाइड कर ओके एमती आ बहुत हाई अचीवर्स इंडियन फॉरेन सर्विस यू अंडरस्टैंड माने सिविल सर्विस रे यूपीएससी रे बहुत ऊपर रैंक्स गुडा रखिले ओके जनरली से माने ताको चूज करते आगुरु सेमथिला एबे तो टिके माने 50 तळକୁ भी केबे केबे पळे आउछ तो वैकेंसीज भी बहुत कम थाए मींस वेरी हाई अचीवर तांकु कोन दरकार पड़ला सुसाइड करिया पे तेनु मेंटल हेल्थ इश्यूज आजिकाली रो लाइफस्टाइल आ कंपटीशन जोगु बहुत गुडे रहउछ तेनु जणे यदि डिप्रेशन रो ओके औषध खाउची आउ से केतल अनसाउंड माइंड रही जाउची ताको आपण लुनाटिक कहबे कि ओके सभ्य ये रे सेटा कुआ जायनी किंतु ए सब टर्म गुडा थिला काई थिला मु सेटा कहउथिल बट आमे जो नेचुरल जस्टिस कथा कहउची एबे यूके रो कंडीशन कोन आपण जानचंती those who are सेति पई तो यू नो आई विल बी दिस लीगल जीके टिके भी हमको पढ़िया पे पड़ियो अवश्य हम एग्जाम रे पढुनी ओके किंतु इंटरव्यू रे पढुची एंड आपण अलगा स्टेट रो एग्जाम्स भी दे परिबे सपोज आपण हिंदी पढी जंती स्कूल रे ओके 10th पर्यंत हिंदी थिला ताले जेते नॉर्थ इंडियन स्टेट्स अछि सब रो दे परिबे आपण पढी ताकर भी वैकेंसी टिके भलो बार ठीक अछि ताकर लीगल जीके टा पड़े केते गुडे जगह ओके सो बेसिकली मु कौन कहली ना ये जो कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नाउ आम ऊपर रूल करथिला एबे ता अवस्था कौन ओके फाइनेंशियली डेमोग्राफिकली एंड लॉ एंड ऑर्डर हिसाब रे जे जे आसीबो कर दे पड़ेबो किछि केटसेटी अटकेबार नै ओके लॉ एंड ऑर्डर हैज कंप्लीटली कोलैप्स को गां कथा कहूनी लंडन कथा कहूछ लंडन रे बहुत गुड़े जगह पुलिस पशुनी एबे जेमती आगुर हमर इंडिया रे थिला ना कि एही जगह रे नक्सलाइट्स माने अछंती एठी पुलिस पसिबो एबे सेमती जगह नाही प्राय सब एलिमिनेट हेलेनी आ होम मिनिस्टर भी कहिसेंती कि वर्ष 2 वर्ष भीतर टोटल सफा हेबे से माने ओके नक्सलाइट लंडन रे इट हैज जस्ट बिकम द ऑपोजिट देयर आर मेनी प्लेसेस इन लंडन नाउ वेयर पुलिस कैन नॉट एंटर काहे ना सिटी माइग्रेंट्स माने मेनली से बांग्लादेशीज पाकिस्तानीज गरिका रही कि से माने से एरिया टाको पूरा निजर कर दैछंती टू एन एक्सटेंड दैट तांकर जे मेयर अछंती तांकर सिटी रो से भी सेही बैकग्राउंड रो अछन माने सेही बैकग्राउंड माने ही इज बेसिकली आई गेस ही इज फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन ओके काई कथाटा कहली ना से माने कोन कोन सब करथिल नॉट ओनली अगेंस्ट इंडिया जेते तांकर कॉलोनीज थिले ओके एनीवे तो सेही जो टर्म गरिका से माने यूज करथिले से टर्म्स हमें यूज करनु तो कंटिन्यू सेटा लिखिले IEA contained terms like lunatic upon derogatory लिखि परिबे derogatory terms like lunatic to describe individuals of unsound mind BSA on the other hand BSA on the other hand से term हम यूज करूनु okay BSA on the other hand replaces such derogatory terms with modern and inclusive language such as a person of unsound mind ताको lunatic गरिका कुआउनी such as a person of unsound mind comma promoting respectful discourse person of unsound mind comma promoting respectful discourse legal discourse रे जेतले आपण ओके कथार्था होची कोर्ट रे तो सेठी जणो को आपण lunatic कहबे सेटा derogatory ठीक अछि so more respectful terms have been introduced तेणु से लोकटा को पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को ओके प्रमोटिंग रेस्पेक्टफुल डिस्कोर्स ठीक अछि तापरे नेक्स्ट पॉइंट को आसंतु नंबर 5 एटा भी गोटे इंपोर्टेंट एटा आपण एटले एस्टॉपेल पढिबा टाइप्स ऑफ एस्टॉपेल पढिबा सेथरे मेजर डिफरेंस कोन आनिची ओके भारतीय साक्ष्य अधिनियम सो पॉइंट नंबर 5 एस्टॉपेल प्रोविजंस
estoppel provisions. So take down estoppel under IEA estoppel under IEA, comma, particularly concerning the denial of a landlord's title, particularly concerning the denial of a landlord's title by a tenant, denial of a landlord's title by a tenant was limited to the duration of the tenancy. Was limited to the duration of the tenancy. Okay. So under IEA, estoppel particularly concerning the denial of landlord titles by a tenant was limited to duration of the tenancy. BSA, continue, BSA extends estoppel to apply. BSA extends estoppel to apply even after the termination of relationships, even after the termination of relationships like tenancy, even after termination of relationships like tenancy. Okay, comma, preventing contradictory claims, preventing contradictory claims post termination, post termination. So relationship, okay, between the landlord and the tenant जोटी सरीला Indian Evidence Act, okay, estoppel ro limit ta se porjanta taku douthala. But ebe even after ending of relationships like that of the landlord and tenant, okay, tenancy relationship ଆପଣ ସରିଲା ପରେ ବି, okay, ଭାରତୀୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଧିନିୟମ under ରେ ଆପଣଙ୍କର estoppel extend ହଉଛି. ତାର ଲାଭ କଣ ହଉଛି ନା ଆଗକୁ ଯାଇକି, okay, ଯଦି ଆଗକୁ କଣ କେसेस ହେଲା କି ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଲା, okay, ତ contradictory statements ଆଉ positions, okay, ନେଇ ହବନି, right, after the termination. କାହିଁକି ନା ସେଟା extend କରୁଛି even after the ending of the relationship. ଠିକ ଅଛି, ସେ ଟେନାଣ୍ଟ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲର୍ଡ ଆଉ ଟେନାଣ୍ଟର ରିଲେସନସିପ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା କହିଥିଲା ସେ ଟାଇମରେ, ଓକେ, ଯଦି ସେ ପରେ ପୁଣି ବଦଳଉଛି ତା କଥା, ଆଉ ଅଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ, ଓକେ, ତାର ଲିମିଟ ଥିଲା ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଦ ଟେନେନ୍ସି, ଯୋଉଠି ଟେନେନ୍ସି ସରିଲା ତାପରେ ସେ ଏଷ୍ଟପେଲଟା ଲାଗୁ ହଉନଥିଲା। ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗକୁ ପୁଣି ଫର୍ଦର ଲିଟିଗେସନ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ। ସପୋଜ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଭଡା ରହୁଥିଲି ହେଲା, ସେଠି ମୁଁ ଆକ୍ନୋଲେଜ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ହଁ ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ କଣ କରୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଟାଇଲ ଡିସଫିଗର ହେଇଗଲା କି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ତାକୁ ଆକ୍ନୋଲେଜ କଲି କି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣୁଥିଲି ଜିନିଷ ପଡିଗଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତମ ଟାଇଲ, ରାଇଟ। ୱାନ୍ସ ଆଇ ବିକମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏଠି ଟେନାଣ୍ଟ ରହିଲିନି, ଠିକ ଅଛି, ତ ମୋ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଟେନାନ୍ସି ସରିଗଲା। ପରେ ମୁଁ କହୁଛି କଣ ନା ଟାଇଲ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେଟା ଆଗରୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ମୋ ବେଳେ ଭାଙ୍ଗିନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ହାଉ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଦିଟାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟ୍ରିଟ କରୁଥିଲା। ବଟ୍ ବିଏସଏ এই কেসরে কোন করিব না, ইভেন আফটার টার্মিনেশন অফ রিলেশনশিপ, ওকে, লাইক দ্যাট অফ the tenancy relationships between the landlord and the tenant, okay, estoppel will continue to apply even post termination, মানে relationship টা সরিগলা পরে, ঠিক আছে। তা মানে ମୁଁ ଯାଇ ପରେ କହିପାରିବିନି କି ସେଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ acknowledge କରୁଛି ତାକୁ, accept କରିଛି କି ହଁ ମୁଁ ଭୁଲରେ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ରାଇଟ୍।
सो एस्टोपेल इज वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जोड़ा कि गोटे क्लास खाली लगे आमको बुझिया सेमती तो कहले 15 मिनट माने स्टैट्यूट हिसाब रे पढ़िले आपण एस्टोपेल फटकिनी सार देबे बट तार जो रीजनिंग गरिका सेटा आपण टिके भलरे देखिया पड़ियो टाइप्स ऑफ एस्टोपेल भी बहुत प्रकार रो अछि तो गोटे गोटे एग्जांपल किछिटा तो हमर इंडियन लॉ रे मिलिबोनी सेटा आपण इंग्लिश लॉ देखिया पड़ियो ठीक अछि तो सेटा दैट विल टेक वन क्लास इन इटसेल्फ बुझि पालो तो एटा हला एस्टोपेल प्रोविजंस नेक्स्ट नंबर 6 judicial notice of international treaties okay international treaties related judicial notice right so number 6 judicial notice of international treaties judicial notice of international treaties ठीक है जी so एटा स्पेसिफिक प्रोविजन नथिला इंडियन एविडेंस एक्ट रे किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे एटा स्पेसिफिक प्रोविजन आपे रखै ओके तो टेक डाउन IEA IEA did not specifically mandate IEA did not specifically mandate judicial notice of international treaties. IEA did not specifically mandate judicial notice of international treaties. ये जो आंसर टा लिखुचंदी मु बोधे 10टा खंडे 10-12टा पॉइंट हमें लिखिबा आउरी बहुत डिफरेंस अछि माने सेक्शन लेवल रे बहुत डिफरेंस अछि देखिबा जोडा सेक्शन को सेक्शन रे जिबा इंटरव्यू रे तले क्वेश्चन पचर आउची टॉप 3टा की 4टा डिफरेंस माने रखन ओके कहीं ना इंटरव्यू रे तो मो 10टा डिफरेंस कहि परिबिन ना तो जोडा मोस्ट इंपोर्टेंट सेटा मन रखियार अछि तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ER रिलेटेड डिजिटल ओके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स रिलेटेड तार एडमिसिबिलिटी ओके तार यू नो कंसीडरिंग इट एज प्राइमरी एविडेंस से गुडा सब प्रथमे कहबे तापर एगुडा जो बहुत ही पर्टिकुलर की स्पेसिफिक जिंस अछि एगुडा परे कहले चलिबो केना समय आपनकर कम अछि इंटरव्यू कथा कहछ ओके सो कंटिन्यू BSA introduces provisions for courts BSA introduces same point रे judicial notice of international treaties प्रथमे अपन लिखिले IEA did not specifically mandate judicial notice of international treaties तापरे कंटिन्यू BSA introduces provisions for courts ये नोट्स करूचंती माने ये माने दिस पर्टिकुलर कोर्स ए जो कोर्स टा मु BSA रो कोर्स टा ओके एटा हमर एटा ओपन कोर्स टाइप रो ओपन कोर्स इन द सेंस दैट तार जो वीडियोस उडा क्लास वीडियोस उडा एटा एई कोर्स पई पर्टिकुलर कोर्स पई हमर YouTube रे रहइबो ठीक अछि जो माने ऐप को एक्सेस अछि जहां को माने जो माने एडमिटेड स्टूडेंट्स तो आपन को तो तार नोट्स और से सब दिनस सेथरे मिलि जिवो बट जो माने खाली जस्ट खाली वीडियो ऊपर डिपेंडेंट अछंती वीडियो देखुचंती ताले आपण पॉज करिकी लिखि दे परिबे नोट्स ता ओके हेडिंग सब हेडिंग्स मु लिखि दोची व्हाइट बोर्ड रे बट तार जो एक्सप्लेनेशन टा जोटा कि वन लाइन एक्सप्लेनेशन मु बहुत लंबा अधिका डाकिबिनी आपण कांसेप्ट टा जस्ट क्लियर हा पई so that you can pause and you can take down ठीक है so BSA introduces provisions for courts to take judicial notice of international treaties to take judicial notice of international treaties comma agreements and decisions made by India in global forums made by India in global forums made by India in global forums ठीक है so courts will take judicial notice of international treaties also okay not all but those which have been made by India in global forums ठीक है एटा हला पॉइंट नंबर 6 तापरे आमे फर्स्ट कोन आमे प्रथम दीटा पॉइंट आपण कोन कोन लिखिले
First 2 points you had written. One was inclusion of year, second is classification of year. Now another very important point, that is admissibility of electronic evidence. So point number 7, it is बहुत important. Admissibility of electronic evidence. Admissibility of electronic evidence. Okay, so इंडियन एविडेंस एक्ट रे कोन होतला, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में एक्सेप्ट होनतला कि तभी एडमिट होतला, बट से तार जो रूल्स गुड़ा एते स्ट्रिंजेंट थिला आ गाइडलाइंस क्लियर एते ना थिला, तेनु कोन ना टेम्परिंग आ ए सब जिंस हे पारु थिला किंबा तार चांस रहउतिला. ठीक अछि, जे मेन कस्टोडियन थिला से सब जिंसडा करिवार चांसेस रहउतिला. ओके, तो टेक डाउन किंतु बीएसए रे बहुत क्लियर डेफिनेशंस अछि. ओके, आउ तार एडमिसिबिलिटी हिसाब रे तार टेस्ट भी दिया हिची, बट जस्ट बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोर्ट कहबे ना एटा हम एक्सेप्ट करिवुनी. ओके, तो से जिंस भी हबन. राइट, सो टेक डाउन आईए, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, electronic evidence faced challenges. Electronic evidence faced challenges in admissibility due to stringent requirements. Faced challenges in admissibility due to stringent requirements and lack of clear guidelines. And lack of clear guidelines. Continue. BSA explicitly states that electronic evidence cannot be deemed inadmissible. BSA explicitly states that electronic evidence cannot be deemed inadmissible merely because merely because it is in electronic form. Merely because it is in electronic form. ठीक है, तो केवल खाली यही कारण जो कि एटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रे अछि बोली सेटा एविडेंस हे परे एडमिसिबल हबनी कोर्ट रे, से जिंसटा क्लियरली लिखाई छि. एमति नो कि इंडियन एविडेंस एक्ट रे लिखाइतला कि नहीं सेटा हबनी, सेटा क्लियर नथिला. ठीक अछि, प्लस बहुत स्ट्रिक्ट सब चैलेंजेस थिला जो सर्टिफिकेशन ओके और एडमिसिबिलिटी गाइडलाइंस थिला. जेतु एते क्लियर गाइडलाइंस नथिला, तेनु सेटा गोटे बहुत थरो सुप्रीम कोर्ट ताको इंटरप्रेट और री इंटरप्रेट करछन. ओके, बट भारतीय साक्ष्य अधिनियम रे क्लियरली से जिंसटा कुआई छि कि आपण कोनोसी एविडेंस को इनएडमिसिबल इन कोर्ट कहि परिबेनी, कारण जदि गुटी माने ओनली द रीजन विल बी दैट इट इज इलेक्ट्रॉनिक. अलग रीजन हे पर टेम्पर हे जाई छि, खराब हे जाई छि, कोन हे जाई छि, से तले अलग कथा, ताले इनएडमिसिबल हे परिबो. किंतु केवल एटा गोटे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बोली एटा इनएडमिसिबल हबो, दैट इज नॉट करेक्ट. ओके, सेटा क्लियरली सेटा बीएसए मना करछि, सेमति हबनी. बुझि पाले. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 को आसंतु. प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑथेंटिसिटी, जोटा हमें गोटे मेजर इशू गोटे कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टा हमें यूज करिबा सेटा ऑथेंटिक कि नहीं ना, सेटा टेम्पर हेछि, चेंज हेछि, मैनिपुलेट हेछि, हम केमति जानिबो. ओके, सो पॉइंट 8 लिखंतु, प्रिजम्पशन ऑफ ईआर's ऑथेंटिसिटी.
ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑथेंटिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तो आपण कहले बे सेटा प्राइमरी एविडेंस भले भी यूज हे परिबो, तो सेटा ठीक अछि कि नहीं, ओके सेटा प्योर अछि कि नहीं, कि किछि टेम्परिंग हेछि, किछि चेंजेस हेछि, किछि मैनिपुलेशन हेछि, ओके ताले कोनटा हाउ आर यू गोइंग टू ओके ensure that, okay so take down IEA did not provide specific provisions. IEA did not provide specific presumptions, specific provisions regarding the presumption of authenticity of ERs. IEA did not provide specific provisions regarding the presumption of authenticity for ERs, electronic records. Continue. BSA introduces a presumption, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी ओके कहले एटा केते वर्ष रखाई कि एतिकी वर्ष रु पुरुना जदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टा थिबो ताकू आपण ऑथेंटिक भाबिबे। एनीवन हु कैन टेल मी जे पढ़ी आगुरु टिके कि एमसीक्यू सॉल्व करचंती और आपण को यू नो द आंसर। नहीं नो वन तो एटा देखिए हमें आज टेस्ट रो माने क्विज रो क्वेश्चन रो अछि एटा, ओके राजेश्वरी आपण जानचंती एटा? Sir, 2 to 3 years maybe. ओके विल सी दैट, ठीक अछि विल सी दैट। एटा बेसिकली कोन ना आपनकर 5 वर्ष कराई माने गोटे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जोडा कि प्रूव होउची कि आरो एक्जिस्टेंस 5 वर्ष रु पुराना ताहले प्रिजम्पशन अपन नेबे कि सेटा ऑथेंटिक अछि, ओके तो कंटिन्यू। BSA introduces a presumption. BSA introduces a presumption that ERs हला मु ER कहूची आपण भी ER ही लिखंतु परीक्षा रे। अच्छा एगुडा जो शॉर्ट फॉर्म आमे लिखुचु, ओके तो सेटार रूल कोन परीक्षा रे भी लिखि हबो। प्रथम थर जोठी आपण यूज करचंती इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ता साइड रे ER लिखि देबे, तापर सबुडी ER लिखले चली, ओके टाइम भी हमर सेव हिजो राइट kana प्रोसीजरल पेपर रे सेठी सबुठु टाइम रो आपण को टेस्ट हबो। ऑप्शनल पेपर्स रे जेतो आधा घंटा अधिक मिल जाउची, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेती 6टी, मार्क भी सेती 150, किंतु आधा घंटा अधिक माने 180 मिनिट 3 आवर्स, ओके जोठी प्रोसीजरल रे 150 मार्क्स 150 मिनिट्स मींस 1 मार्क इज इक्वल टू 1 मिनिट। एठी टिके अधिक आपण को किछि टाइम मिल जिवो, 5 मिनिट गोटे क्वेश्चन को अधिक मिलुची, 30 क्वेश्चन करियार अछि, ओके ऑप्शनल पेपर्स जहाँ भी आपन क्राइम्स एंड टॉट नेले कि जहाँ भी आपन ऑप्शनल नेले, ओके न्यू स्टूडेंट सम ऑफ यू हैड मेसेज फॉर मु ऑप्शनल टा चॉइस केमती करिवे तो सेटा मु केतले ओडे ओके नॉट इन द लाइव क्लास कहना ऑलरेडी आपन 6 घंटा क्लास होची ता ऊपर आउ अलग लाइव करिवाटा आपन कहबी डिफिकल्ट हो ताको अटेंड करिया मु तडा रिकॉर्ड करके केबे दे देबी YouTube रे आपन से लिंक शेयर कर देबी केमिति आपन चूज करिवे। चॉइस रो दीटा जिंस थाए आगुरु कहउतला कोन हम भलो मटेरियल नहीं आरो तारो एई सब्जेक्ट रो मार्क मिलेनी एई सब्जेक्ट रे सेति पई एई सब्जेक्ट रो नियम, दैट इज नॉट द केस। कथाडा होला कोन कि आपण जदी एनालाइज करिवे ओके राइट फ्रॉम मु जेबेटू ओके एई डोमेन रे आसीली गोटे जिंस मु देखिची कि जो माने निजे पढ़ंती से तो तांको हिसाब रे से तांको जोडा भल लागी से मान तांको नेबे सब्जेक्ट जो माने कोनोसी मेंटरशिप किंबा कोचिंग की इंस्टीट्यूशनल जगह रे जॉइन करंती सेठी कोन होवे मोस्ट जगह रे इंस्टीट्यूशन ताको पई चूज कर देता है, ठीक अछि आउ ताको कहीं चूज करथांती किछि पर्टिकुलर इयो को राइट कहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत जण नियंती आउ कॉन्ट्रैक्टर भी बहुत जण नियंती बट यू सी इन द लास्ट 3 इयर्स टॉप 10 भीतर देखंतु कॉन्स्टिट्यूशन ज्यूरिस्प्रूडेंस पिला आपण पाइबे कॉन्ट्रैक्ट रे भी पाइबे, ठीक अछि आज बोधे एई
15 तारीख भितर ए वर्ष रिजल्ट भी आसी जिवो तो सेथरे भी अपन देखियो मोरले से आई हेच ओके आमर कॉलेजेस रे से जिनसटा थिला कि बहुत जगह रे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ा हुए ठीक है तो स्पेशल पेपर भी रखा हुए ड्यू टू वेरियस रीजन वास्ट है तार पुणी यू नो रिसोर्स पर्सन एंड लॉट ऑफ थिंग्स तेणु आपण पाखे किसी बाट ही नाला जदि आपण कोठी भी जाइए मेंटरशिप आप चाहते सी ऑलरेडी कहदे भाई आम यही 3टा सब्जेक्ट ही दौचु ऑब्वियसली मुझे 3टा ही नेबी मोर इच्छा थिले भी कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं पारिबिनी आ बहुत मिथ्स अच्छी ओके जे केबे भी पेपर एनालाइज करना से माने कहते कॉन्स्टिट्यूशन रे कौन क्वेश्चन पड़े सेटा कई किसी कहि परियन से कोठु कौन पड़ियो ओके कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी वास्ट दैट इज ट्रू कॉन्स्टिट्यूशन बहुत वास्ट किंतु ओजेएस रो क्वेश्चन देखिले 12 वर्ष रो सबुठु सेफेस्ट हैला कॉन्स्टिट्यूशन जूरिस्प्रुडेंस भी से कहीं ना आमे केबे एनालाइज ही करनु अपन जदि केबे एनालाइज करिवे सेम क्वेश्चन 7 वर्ष रिपीट हिच ओके 6टी क्वेश्चन तो अपन 15टा हार्डली 15टा क्वेश्चन थिबो जोडा सब वर्ष रिपीट होची मते 15टा क्वेश्चन करिकि जिबार अछि सेति गला कथा जे रिपीट ही हबो अनलेस ए माने पैटर्न चेंज करछन तेनु किए कोन कहूची एटा नै जे फर्स्ट हैला निजरो इंटरेस्ट नेक्स्ट इंपोर्टेंट जिनस आगुर आसला मटेरियल कार मिलुची मटेरियल एबे सब जिनस रो मिलुची ओके एमती किछि भी कोनोसी सब्जेक्ट नै जार मटेरियल ता आपको मिलिबन आउ थर्ड हैला मार्क्स एज आई टोल्ड यू मार्क्स सब सब्जेक्ट से मिलुची ओके लास्ट ईयर रो आपण देखंतु टॉपर्स को भितरे टॉप 10 रे एटलीस्ट 2 जण पिला तो अछंती जो माने जूरिस्प्रुडेंस कॉन्स्टिट्यूशन नै छथि माने मो जानिया रे 2 जण आउ भी बेसी थाई पारंती रैंक 3 रैंक 5 जूरिस्प्रुडेंस कॉन्स्टिट्यूशन थिला 2 जण कर ओके आउ भी अधिक पिला थाई पारे आई डोंट नो तेनु मो कहा कथा जो सब्जेक्ट सिलेक्शन निज बुद्धि विवेक हिसाब रे करंतु मते कॉन्स्टिट्यूशन ता भल लागुची माने जो जिंस मते भल लागुची मु टिके एक्स्ट्रा ओके माइल्स जाई कि ताकू पढिबी जो जिनसटा टेक्स्ट बुक रे नाही ताकू भी गूगल रू सर्च करी मु केतरा जिनस बाहर करी काहे मो इंटरेस्ट सेतरे अछि आ सेई गुडा मते अधिक अधिक मार्क्स दे दबो ओके रादर दैन यदि मु आपन ऊपर फोर्स करी कि आपन एटा ही पढंतु ताले हां ठीक अछि सर जा लोचंदी ताकू ही भल रे पढु आपन को इंटरेस्ट नाही किंतु कदाटा हला से ओके सो कीप दैट इन माइंड राइट सो BSA introduces a presumption that years older than 5 years are authentic unless proven otherwise जदि एटा प्रूव हो जाउची कि सेटा टैंपर हेची कोन ताले अलगा कथा अदरवाइज प्रिजम्पशन ए रहइबो कि जदि 5 वर्ष रु अधिका इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड टा अछि ताले सेटा जेन्युइन अछि ओके ऑथेंटिक अच्छी से राइट एटा हला पॉइंट नंबर 8 देन कम टू पॉइंट नंबर 9 एटा गोटे फंडामेंटल पॉइंट एविडेंस रो डेफिनेशन ओके सो पॉइंट नंबर 9 हेडिंग टेक डाउन definition of evidence so first लिखंतु एटा ऑब्वियस कथा कि एविडेंस रो डेफिनेशन रे एक्सप्लिसिटली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म उडा नथिला कोथरे इंडियन एविडेंस एक्ट रे किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम रो अछि तो टेक डाउन IEA defined evidence without explicit reference to electronic forms IEA defined evidence without explicit reference to electronic forms continue BSA expands the definition of evidence to include statements given electronically reflecting the prevalence of
digital communication. DSA expands the definition of evidence to include statements given electronically, reflecting the prevalence of digital communication. Okay, eta hala point number 9. Point number 10 be both important in the sense that privileged communication. Privileged communication ଭିତରେ ଆମେ husband wife को କଥା କହୁଥିଲୁ. To some extent ଆମେ lawyers, okay, ତାଙ୍କ clients and ସେମିତି professional relations କିଛିଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ. But କିଛିଟା constitutional post ରେ ଯୋଉ communication ଥାଏ, okay, ତା ବିଷୟରେ Indian Evidence Act କିଛି କହୁନଥିଲା. Okay, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ତ generally constitution ର ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନିଅନ୍ତି, they take the oath of office and secrecy. He, as the Prime Minister of this nation, I will know a lot of things which is not known to the common people. ମୁଁ ସେଟା ବାହାର ଯାଇ କହିଦେବିନି. ସେଇଟା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି, oath ଟା ନିଅନ୍ତି. That is called the oath of office and secrecy. ठीक है. For example, you know about the Netaji Subhash Chandra Bose को files विषୟରେ आपण ଜାଣିଛନ୍ତି. ତାଙ୍କ death କେମିତି ହେଲା, କଣ ହେଲା. Previously ଜଣେ Prime Minister ଥିଲେ, ସିଏ କହିଥିଲେ କି ଯଦି ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଛି ରେକର୍ଡ ତାକୁ ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି because of this oath of office and secrecy, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯଦି ସେଟା ବାହାରକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ରିଲେସନ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନମ୍ବର 1. ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବହୁତ ବଡ ହିଣ୍ଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ କି ଏଠି ବି ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ. ଠିକ ଅଛି, ସେ ତା ଆଗକୁ ଆଉ ବଢିଲେନି, କହିଲେନି କଣ ଜିନିଷଟା, ତାକୁ ଆମେ ଯାହା ଏକ୍ସଟ୍ରାପୋଲେଟ କରିପାରୁ. ଓକେ, ସେମିତି ଯୋଉ ମିତ୍ରକ୍ସିନ files ଅଛି, what is mitroxin files? Mitroxin, he was a Soviet agent. Okay, ସେତେବେଳେ ସେଟା KGB ତାକୁ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେ ସିକ୍ରେଟ ସର୍ଭିସ ରଷିଆର, USSR ର ସେତେବେଳେ. ତେଣୁ ସିଏ he knew a lot of secrets. ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପେପର ପେପର ଥିଲା. କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ତାର, ସିଏ ପଳେଇଲା ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ କୁ, ଡିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିଗଲା, ଓକେ, ୟୁଏସ୍ କୁ. ଆଉ ସେଠି ଯାଇକି ଗୁଡେ ତାର ସିକ୍ରେଟ୍ସ ଦେଇଥିଲା. ସେ ତା ଭିତରୁ ବି ବହୁତ କ୍ଲିୟରଲି ଅଛି କି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ କେସରେ କଣ କଣ ହେଇଥିଲା. ବଟ୍ ଏନିୱେ, ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି, କାହିଁକି ନା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟଟା ରିଲେଟେଡ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍. ତ ନମ୍ବର 10 ଲେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ. ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫ ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ. Protection of ministerial communication. Ministerial communication कौन? Obviously जोड़ा गोटे minister, okay, आउ गोटे constitutional authority भितरे होची, right? So take down mainly एठी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, okay, जो high level government discussions करिका से गुड़ा ताकू protect करूची. काहे कि ना हमर तो जेमती सबु litigants अछंती केते जण, बहुत बड़ बड़ लॉयर्स भी, से माने देशर सिक्रेट टाकू भी कहउचंती ओपन कोर्ट रे आनिकी सबमिट कर. ओके, केवे केवे सुप्रीम कोर्ट भी व्यस्त हो जाउचंती सेति में. इफ यू रिमेंबर द रफाल केस, ठीक अछि, जो ए माने जो लड़ू थिले आर पार्टी अगेंस्ट द गवर्नमेंट, से माने एई एक्सटेंट को गले कि आपण रिवील कर दियंतु से केते टंका रे आस्तिला, कोन आस्तिला, एवरीथिंग. तो कोर्ट कहले से गुडा नेशनल सीक्रेट्स, ताकू कोन तुमे कहउछ कि कोर्ट रे रिवील कराबो, तो कोर्ट ताकू मगैले सीक्रेट, ओके, किबा आपण सील्ड, ओके, एनवेलप रे मगैले, से कोर्ट ताकर जा देखिया देखिले. ओके, I think that this came up during 2019 elections. रफाल रे आइगला से आइगला, ता कोर्ट भी कहले भाई किछि देखि जो हमें सब डॉक्यूमेंट सब पब्लिक करी होबनी, बट नथिंग हैज हैपेंड. बुझि पाले. सो एनीवे, जा भी हो, protection of ministerial communication माने especially between ministers and president and other higher government officials, से जो जहाँ communication होची ताकू protect करा जी. Okay, so take down, IEA
did not specifically address IEA did not specifically address the confidentiality of communications. IEA did not specifically address the confidentiality of communications between ministers and the president. IEA did not specifically address the confidentiality of communications between ministers and president. BSA introduces safeguards. BSA introduces safeguards preventing courts from compelling the production of such communications, preventing courts from compelling the production of such communications, maintaining confidentiality in high level government discussions, maintaining confidentiality in high level government discussions. Okay, so that is your point number 10. It is a important ଜିନିଷ कि high level ministerial communication को include करा ହେଇଛି ଗୋଟେ type of privileged communication और courts को okay କିଛି barriers ରखା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ରଖିବେ ସେଟା ସେମିତି secretive ହେଇଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ common ଜିନିଷ okay ସେଇଟାକୁ generally ଆପଣ ଇଏ କରିପାରିବେନି right ତାକୁ stop କରି ହବନି but if it involves national secrets and all ତାହେଲେ courts are generally prevented or safeguards are there कि जो पार्ट टा पब्लिक करी होबो सेटा पब्लिक करी सबुटा करी सेटा कोर्ट्स निजे भी जानछन रफाल केस रे रफाल बेले तो आसी नथला ना बीएसए रफाल केस रे जो जजमेंट दिया हला सेते बेले भी सुप्रीम कोर्ट से कहले कि जोडा पब्लिकली अवेलेबल करई होबो सेगुडा किछि असुविधा नै ठीक अछि बिकॉज़ इट वाज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संगे डील कला ता मझिरे au के कोनोसी कंपनी au ये सब से सब जिंस रे नथला इट वाज ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ठीक अछि तेणु से बेसी किसी कहबार ना राइट बट जस्ट इट वाज ड्यूरिंग द इलेक्शंस तेणु बहुत जन चेष्टा कले ओके ताकू बढ़ई चढ़ई की ये करने यू नो अवश्य आमर तो दरकार नहीं वोकैबुलरी यू नो व्हाट इज ऑक्सीमोरन OXYMORON ऑक्सीमोरन नथिंग टू डू विथ समथिंग कॉल्ड मोरन बट ऑक्सीमोरन ऑक्सीमोरन माने कोन मोरन इज समवन हु इज स्टूपिड इडियट जब आपण कोन ताकू गोटे कलोकियल इंग्लिश रे ताकू मोरन कह जाय राइट ऑक्सीमोरन कोन कहि परबे कि ऑक्सीमोरन हला गोटे वर्ड जोटा तार टोटली ऑपोजिट मीनिंग वर्ड संगे आपण मिसै दैछन ओके ही इज रेगुलरली इरेगुलर ठीक अछि रेगुलरली इरेगुलर राइट से हिसाब काई इटा आपण कहूची काई कि ना जो सोर्स ये सब प्रोब्लेम करैथिला सेतबेले 2019 रे ओके सेटा गोटे न्यूज पेपर सेटा गोटे ताको सिविल सर्विस पिला बहुत पढ़न तक ओके नाटा कोनी गोटे धर्मर नारे से न्यूज पेपर अछि बट से न्यूज पेपर जो धर्मर नारे अछि से पूरा ऑक्सीमोरन रो काम करे ओके माने जस्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग अगेंस्ट दैट रिलीजन इट इज सब बेले तार आपण लेखारे पाइबे ओके एंटी गवर्नमेंट हवा ठीक किसी असुविधा नहीं बट एंटी गवर्नमेंट हवा ठीक इन द सेंस दैट यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट किंतु गोटे लेवल को पळेबा जोठी कि आपण गोटे लोक को भल पाउ नांती घृणा करचंती किंतु भगवान को आशीर्वाद रु ताको हरै पाउ नांती ता माने कोन आपण देश को भी देश पई भी खराब भाबिबे देश कर पई आडु छडु लिखिबे ओके सो एनीवे तो सेटा पूरा ताकर एक्सपोजे अछि ऊपर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल ओके लीगल हिस्ट्री देन गूगल एंड फाइंड आउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एनीवे 11 को आसंतु
तो ये जो हमें कहलु सेकेंडरी एविडेंस ईआर टा आगुरु सेकेंडरी एविडेंस थिला बे प्राइमरी एविडेंस हे जाउछ आगुरु इंडियन एविडेंस एक्ट रे सेकेंडरी एविडेंस जहा आपण कहउतिले जहा जहा तार स्कोप थिला ताकू आपण आउरी एक्सपेंड कर दैछन्ती बीएसएल ओके बट एनीवे आई थिंक वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टाइम तो आउ पांचटा अछि ओके दैट वी विल सी टुमारो विल जस्ट गो टू द क्वेश्चंस नाउ ठीक अछि आज जहा पढिलु कि एमती जनरली आपण कहि परिबे ओके किछिटा क्वेश्चंस हमें देखिबा which are basic okay some basic questions related to your whatever we have studied okay question 1 to take around 30 seconds ठीक है सर 30 सेकंड भीतर आंसर टा कोन some of these we have already covered today some we have not covered question 1 ta dekhontu tell me the answer how has the classification of electronic records changed from Indian Evidence Act 1872 to BSA 2023 electronic C, sir. records हाँ C. ठीक अछि आपण येटा आपण माने पढी कोन देखो ओके आपण सी कहले अदर्स समस्त सी कहउछन Yes, sir. C. सी सी इज द करेक्ट आंसर ओके सी इज द करेक्ट आंसर कोन देछि ना इलेक्ट्रॉनिक records are considered secondary evidence under IEA but are now classified as primary evidence under the BSA बुझले now come to question number 2 देखो मैडम what significant changes regarding the burden of proof is introduced in Bharatiya Sakshi Adhiniyam compared to the Indian Evidence Act Also C. C बाकी आज जहाँ डिस्कस कलु गोटे हिंट देथिली ठीक अछि so you are correct okay that is C is the answer the burden of proof can shift during the trial based on specific circumstances okay technically speaking Indian Evidence Act रे भी more or less सेमती situations थिला जोटी की burden of proof ता आपनकर okay but again that you know you burden of proof or onus of proof एटा हमें लूजली यूज करूछु टेक्निकली आरो यूसेज ता अलगा तेनो सेटा जेतरा हमें कांसेप्ट ता बुझिबा दिटार then we can appreciate question number 2 in a better manner ठीक है so anyway answer आ भितरु मोस्ट एप्रोप्रिएट सी हो सबले मन रखिबे बहुत टाइम रे हुए आपण होती ये आंसर टा भूल अछि माने लाइक किछि भी ऑप्शन एथरे ठीक नै सबुटु क्लोजेस्ट ऑप्शन जोटा ठीक थिबो सेईटा को मार्क करयार अछि काहे कि हमें तो केबे यू नो प्रॉपर्ली पढनु जो इंस्ट्रक्शंस रे सबु ओएमआर लेवल माने आपनकर एमसीक्यू एग्जाम्स रे सेटा लिखाइ थाए ओके कि जदी आपनकर कोनोसी आंसर ठीक लागुनी जो नियरेस्ट जोटा सही आंसर ता आपनको मार्क करिवार अछि नाउ कम टू क्वेश्चन 3 in context of estoppel which modification does BSA 2023 introduce compared to the Indian Evidence Act already discussed for you diagram B. others samaste baki what will be the answer So B. that is correct okay B is the correct answer so already we have discussed estoppel now applies even after termination of certain relationships like tenancy okay ये जो क्वेश्चन जोड़ा हम डिस्कस करछु आरो डिटेल सॉल्यूशन ऐप रे आपन को ओके गोटे दिन पर आपन अपलोडेड हे जो तो सेटा आपन ताकू पुनी आउथरे पढी पारे एटा तो मुझे खाली आंसर ता कहि दो डिटेल डिस्कशन आपन यू विल गेट इन द ऐप ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 टा देखंतु
How does BSA address the admissibility of electronic agreements compared to IEA? Electronic agreements मते गोटे ऑनलाइन लोन नबार अच्छी ओके सब ऑनलाइन हे गला अकाउंट को पैसा पळे आसला ओके बट मु केबे तांको ऑफिस को ही जाइनी राइट डिजिटल सिग्नेचर रे हला राइट तो तारी ऊपर से क्वेश्चन पचर कोन हो आंसर So C. सी अदर्स ऑलरेडी एटा में देखिछु यू आर करेक्ट सी विल बी द आंसर एगुडा सब बेसिक लेवल क्वेश्चंस अछि ओके हमें किछि लाइक किछि सेक्शन सरला पर देन वी विल गो टू लिटिल बिट हायर लेवल क्वेश्चंस द बीएसए explicitly presumes electronic agreements to be valid and admissible. Okay. Last question. What change regarding the presumption of ER's authenticity is established in the BSA 2023? Yes. What will be the answer? So B. It I just discuss करथिलु. Okay. B will be the correct answer. Electronic records are presumed to be authentic if they are 5 years old, okay, unless otherwise proved. Okay, unless otherwise proved. So सेटा आपनकर B will be the answer. ठीक अछि आउ किछटा पॉइंट्स अछि आमे एबे डिस्कस करथिलु द डिफरेंसेस भीतर एमनी तो बहुत डिफरेंसेस अछि माने जोडा कि सेक्शनल लेवल रे बहुत डिफरेंस अछि सेगुडा एतले हमें सेक्शंस पढिया बट आउ किछटा मेजर डिफरेंसेस भीतर जदि हमें कहबा आउ पांचटा मेजर डिफरेंस अछि सेटा काली मु ताको कहबे ओके आजिरो क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कोनटा लिखिबे कैन टेक डाउन ओके काली जो माने लेखि पठै छथि मु वॉइस नोट रे सी जेतले वीकली टेस्ट होची तो सेठी मु ताको डिटेल रे ताको चेक करी बाकी जे तुम कहू गोटे एसे लिखि दियंतु गोटे एटा लिखो तो सेटा सब वॉइस नोट रे ही इवैल्यूएट करिवि ओके सेटा आपनकर केना ए पेन रे इवैल्यूएट कले ए जो डिजिटल पेन रे इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम तो वीकली टेस्ट तो जेतु सेटा डिटेल रे ताको देखिया पड़िबो तो सेटा आई विल डू इट इन दिस डिजिटल पेन अदरवाइज बाकी उडा मु वॉइस नोट रे ओके आपनकर वीडियोटा दे देबी ठीक अछि तो टेक डाउन द क्वेश्चन discuss easy questions okay simple questions ru masse start kare then tapare ame exam level questions ku diba discuss the objective of BSA 2023 ame 10 ta देखथिलु आपण ताको आउरी किछटा ऐड भी कर परियो एबे खाली लेखिबाटा बट लेखिबे जोटा सेटा पैटर्न रे लेखिबे तो काली रो वीकली टेस्ट देखि दियंतु मॉडल आंसर टा केमती लिखाई जे आंसर टा किबा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जोड़ा ओजेस रो अछि मेंस रो तार मॉडल आंसर्स देखि दियंतु ऐप रे जो स्टाइल रे लिखा होची ट्राई टू इम्बाइब दैट स्टाइल एग्जैक्टली होबनी बट 40-50% हेले भी काई रे कोन प्रॉपर मार्क्स मिल जो यू विल बी मच अहेड ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ठीक अछि तो एग्जैक्टली ता बळे लिखि होबनी किंतु ताकू अनुकरण कर जदि पाखा पाखी आमे लिखि परिबा ताले भी हमकु बहुत भलो मार्क्स मिले because you will be surprised to know even many people who get very good marks seman taku माने कोन करन ना पूरा ताकू गप भलिया लिखिथिबे ठीक अछि तो बट एबे से दिन थोड़ा आस्ते आस्ते चेंज होजी सो वी नीड टू राइट इन द करंट स्ट्रक्चर हैला so any doubts what we have studied today then you can ask me else we will stop here okay हां कोन सर कोडी जोड़ा को कोचे अपलोड होची एबे कि एबे रिसेंटली किछि क्लास ऑफ रिकॉर्डिंग वीडियोस जोड़ा को हम देखथले किछि अपलोड हेनी लास्ट क्लास रो कि ए क्लास रो हां लास्ट सर क्लास ऐप रे हां वन डे 24 आवर्स आपन को लागे माने आज रो ए क्लास ता काली सकाळे की काली खरा बेले अपलोड होबो बुझिलो तो 24 आवर्स पर तो से जो वीडियोस अछि तो वीडियोस क्लास रिकॉर्डिंग हां वीडियोस लेक्चर वीडियो लेक्चर वीडियोस फोल्डर अंडर रे देखिबे हां लेक्चर वीडियो फोल्डर अंडर रे लिखिबे बीएसए गोडे थिबो भारतीय साक्षर अधिनियम थरे ऑलरेडी आपनकर सर से नवंबर 2024 रो देखौची
ସେଇଟାର ସେଟା ହେଇଥିଲା 2024 ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବେଲେ ଓକେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ସରିଥିଲା पूरा लास्ट वीडियो को पळे आसबे सबुठु तळे ठीक अछि तो सेथरे गोटे बोधे सेइथरे सब आपण वीडियो रा डेट हिसाब रे पडुछि ना तो देखिबे जोडा मार्च डेट रे पडिथिबो काली टू जोडा स्टार्ट हेतिबो सेई गुडा हला न्यू वीडियोस ठीक अछि सब वीडियो रो आगे रे डेट ता तार पडिथिबो एई पर्टिकुलर डेट रो वीडियो टा एटा तो सेथुर आपण मार्च माने आज तो सेकंड टा एटा एटा काली सकाळे की काली आफ्टरनून रे अपलोड होबो तो कालीर वीडियोटा अगेन आज आफ्टरनून रे अपलोड होबो सो गोटे दिन पर सेटा अपलोड हुए राइट सेटा देखि देखि आपण ताको रिवाइज कर परिबे कि जहा भी आपण आउ थारे जदी ताको देखिबार अछि ताले 1.5 की 2x स्पीड रे देखि दे परिबे फर्स्ट टाइम देखछन ताले नॉर्मली आपण 1x स्पीड रे ताको देखि परिबे ओके सेम फोल्डर रे अछि मो अलगा अलगा करनी आ जहा भी तारा पीडीएफ्स दबार अछि सेगुडा भी से सेम फोल्डर से लेक्चर वीडियो फोल्डर रे ही आपण को मिल जिवो वीडियो सहित क्लास 1 आउ क्लास 1 रो पीडीएफ माने ए जो क्वेश्चन जोडा एटा खाली को मो क्वेश्चन टा आपण को देली मो आंसर टा कहूची बट एक्चुअली तार डिटेल सॉल्यूशन टा कोन हबो से सेगुडा सेठी मिलिबो जतले से वीडियो अपलोड हबो ता सहित सेटा अपलोड हे ओके इट टेक्स अराउंड गोटे दिन लागे सेटा फाइन ओके सो विल स्टॉप टुडे तो आज आपनकर डीबी एक्टा ओके सेटा सेकंड क्लास अछि तार सर विल बी टेकिंग एंड राति रे जोटा अछि इंग्लिश प्लस लीगल जीके ओके लीगल जीके टा टिके इंपोर्टेंट लीगल जीके टा का इंपोर्टेंट ना यू नो जो हमरो सुप्रीम कोर्ट रो ओके लॉ क्लर्क रो जो एग्जाम जो थिला फॉर्म फिलअप तर एग्जाम आगु अछि सेही थरे जो लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट केसेस देई चंदी से केसेस रु मु किछिटा डिस्कस करते तो 40 टा ना 50 टा खंडे केस दिया है सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट रे मींस दे आर द मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस ऑफ 2023-24 ता विषय जोड़ा we will start discussing okay at least 5 to 6 cases per class okay कहीं ना सेटा रिसेंट केसेस जोड़ा और बहुत भलो ताको यदि आपण यू नो ताको मैपिंग करिबे कि लिखिबे सेटा आपण को रिसेंट केसेस हिसाब रे बहुत भलो मार्किंग होबो कहिना मोस्ट बुक्स रे से केसेस जोड़ा ए पर्यंत उठाइनी बुझ पाले तो सो that is why that we will discuss from 7 to 8 6 to 7 इंग्लिश रे हमरो 2023 रो एसएस सर जायतिला ठीक अछि आज मु नेक्स्ट पार्ट टा एसए रो नेक्स्ट येटा करबी चारटा एसए जो थिला ए वर्ष क्वेश्चन रो दैट वी हैड कंप्लीटेड सो विल गो टू प्रेसी आज प्रेसी टा देखि दा ओके सो दैट 2023 पेपर टा वन सॉल्व हो गेले देन यू विल गेट इट इन द सॉल्व पेपर टा ओके बाकी सब सब्जेक्ट्स सॉल्व हो जाई माने लॉ पेपर सब आपन 2012 रु 23 अछि खाली इंग्लिश पेपर टा थिला सेटा मु गोटे गोटे करके जा जा पढौची से हिसाब रे ताको सॉल्व करके जाउची क्लास रे एंड फाइनली आफ्टर द लास्ट क्लास विल पुट दैट तर अपन टोटल सेट टा हे ओके fine so we'll stop here then